Our Katha Jani for 2024 to join us on the dais, please. This is a collection of 42 Assamese poems that vividly portray the northeast of India in the post-colonial age in all its resplendent beauty, with thought-provoking focus. His deep portrayed in his poetry, and that is why his poetry is so important to our times. I hand over the mic to Sri Dinkar Kumar. हेलो 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 नमस्कार समीर जी। सबसे पहले आपको बधाई। असमिया कविता के लिए आपको इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और असम के सभी निवासियों के साथ मुझे भी आप पर गर्व महसूस हो रहा है। हम अब बातचीत शुरू करें उससे पहले आपका एक परिचय मैं देना चाहता हूँ। समकालीन असमिया साहित्य और असमिया श्रमिक वर्ग कविता कवि समीर तांती का जन्म 6 फरवरी 1955 को असम के बोकाखात में बिहोरा टी एस्टेट में हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1983 में श्री होमेन बरगोहाई द्वारा संपादित सादिनिया नागरिक में उप संपादक के रूप में की थी। 1984 से 2016 तक असम सरकार के पर्यटन विभाग के साथ आपने काम किया और पर्यटन प्रचार और विपणन प्रभाग के उप निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अब तक समीर तांती के कविता के 14 संग्रह, आलोचनात्मक और साहित्यिक निबंधों के 3 संग्रह, जापानी और अफ्रीकी कविता के 2 अनुवादित संग्रह प्रकाशित हुए हैं और 2 कहानी संग्रह आपने संपादित किए हैं। इनके अलावा उन्होंने प्रतिथि एक सामाजिक सांस्कृतिक पत्रिका और भारत के विभाजन 2 कहानी संग्रहों का भी संपादन किया है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में कविता पुस्तक में युद्ध भूमि कविता, शोकाकुल उपत्यका, अत्याचार और टोकाबही, विषय दुर्भिक्ष, काली नरकोरपरा और समय समय अ, शुद्ध सपूत शामिल है। निबंधों में ईश्वर आवर्जना और पतितालय और एको चिंता शामिल है। वर्तमान में वे महाकवि जयदेव द्वारा लिखित गोविंद का अनुवाद करने और लातिन अमेरिकी कहानियों को असमिया में संपादित करने का काम कर रहे हैं। नियमित रूप से प्रमुख असमिया और अंग्रेजी दैनिकों में सामाजिक राजनीतिक चर्चा के साथ साथ साहित्यिक आलोचना भी करते रहे हैं। समीर तांती की रचनाओं का अंग्रेजी, बंगला, हिंदी और उड़िया सहित अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 2012 में उनको विलियमसन मैगोर लिटरेरी ट्रस्ट द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित असम वैली लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष उन्हें जोरहाट के सोहो प्रकाश द्वारा सोहरबोटा से सोहरबोटा से सम्मानित किया गया और कोलकाता की पश्चिम बंग बंगला अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। उनको 2012 में छगनलाल जैन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2017 में आपको पद्मनाथ विद्या विनोद मेमोरियल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपने अपने साहित्यिक जीवन के दौरान कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, मुंबई, विजयवाड़ा, अगरतला, कोची शहरों में कई साहित्यिक बैठकों और कविता पाठ कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने सबसे कम उम्र के कवि के रूप में 1987 में भोपाल के भारत भवन में आयोजित भारतीय कविता के प्रथम त्रैवार्षिक में भाग लिया। 1988 में एशिया पोएट्री फेस्टिवल भोपाल में और 1989 में भोपाल में विश्व कविता में भाग लिया।
इसके अलावा वे विश्व कविता में एक प्रतिभागी कवि भी थे। 2007 में नई दिल्ली में महोत्सव और सार्क लेखकों की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है और कमल दो कॉलेज डेढ़ गांव से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। फिलहाल समीर तांती अपने परिवार के साथ गुवाहाटी में रहते हैं। अब आपसे बातचीत शुरू करें। हम आपकी कविता यात्रा को जानने के लिए सभी उत्सुक हैं। आपने अपना बचपन कहाँ किस तरह गुजारा था, इसके बारे में चर्चा कर हम बातचीत की शुरुआत कर सकते सबसे पहले आपको नमस्कार। और जो साहित्यकार जो अवार्डी यहाँ बैठे हैं, सबको मेरा मेरा बचपन एक चाय बगल हुआ था। वही मेरा पहला फरवरी हुआ था। वो था 6 फरवरी 1955 में मेरा पैदा हुआ था। मेरे पिताजी वो उड़ीसा से आए थे, माँ भी उड़ीसा से आई थी। तो दोनों कहीं कहीं 1932 के आसपास आए थे। पिताजी कहा करते थे जहाज से हुए लोग उतरे तो तब कोयल की कूक सुनाई दिया था। तो ऐसे ही हम अनुमान कर सकते हैं कि शायद वो वसंत काल ही था। तब वो ऐसा समय था कि पिताजी कहा करते थे कि विश्व युद्ध से 7 साल पहले की बात है। तो शायद 1932 में हुए लोग आए। तो मेरा जब पैदा परवरिश जिस जगह पर हुआ, उसी के चारों तरफ इस तरह का नजारा था, जिस तरह जंगल, झाड़ियां, पर्वत, नदी, नालियां, खेत खलिहान था। और उसके बीच जो आवाम, जो लोग वाग थे, वो इतना कड़ी मेहनत करते थे, मेहनत का इंसान थे वे लोग। तो उनके जीवन और चारों तरफ का जो नजारा, उसी ने मुझे एक लेखक बनने के लिए मजबूर किया है, मुझे ढाला है उसी तरह। और इसी तरह मैं एक लेखक बन गया। जब मैं छोटा था, क्लास 6 में मैं पढ़ता था, तब पहला मेरा लेखन शुरू हुआ था। मैं तब 2 ही लेख लिख पाया था। एक था यही है जिंदगी, यही मेरा पहला कहानी था। और दूसरा था मेरा बचपन। बचपन के बारे में, खुद का बचपन नहीं, मैं लिखा था बचपन के बारे में। लोगों का हर किसी का बचपन होता है, उसी बचपन के बारे में लिखा था। और जब मैं क्लास 9 में था, तब हमारे स्कूल का जो साहित्य पत्रिका था उसका मैं संपादक था। तो तब एक लेख लिखा था बसंत उत्सव। तो हाँ, अभी भी बसंत काल ही आ ही गया है, तो बसंत उत्सव था वो लेखक। लेखन के बाद जब मैं कॉलेज में था, तो कहीं यही समझिए कि 5 कविता ही मैं लिखा था। लेकिन उन कविताओं में क्या हुआ, उन कविताओं में जितने सारे शब्द वहाँ मैंने वहाँ दिया था और व्यवहार किया था, तो इस वो सब सभी चाय बागान से लिया गया। तो उसी को असमिया कविता कहा नहीं जा सकता था। तो बाद ऐसा हुआ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आया 1979 में, तब जून का महीना, बरसात हो रही थी। तो उसी दिन मैं जो कविता लिखा था, तो उसी कविता से मेरा शुरुआत हुआ है। इस तरह से समालोचक और पाठक मानते हैं। तो उसी से मेरा, इसी तरह से मेरा लेखन शुरू हुआ और मेरी बचपन इसी तरह से बीता था। वो यही है। हैं। एक विधा के रूप में आप कविता को किस तरह परिभाषित करना चाहेंगे? आपकी नई कविता की कविता मेरे लिए जीवन है और जीवन ही कविता है। वैसे भी देखा जाए कि कविता के बारे में कई लोगों ने कई बातें कह दिया है, लेकिन मैं इसे कहना चाहूंगा कि कविता है मानव जाति की मातृभाषा। इसी से मानव ने सब कुछ सीखा है जीवन जीने के लिए, दुनिया का विश्व को समझने के लिए, और खुद को खुद पाने के लिए कविता ही हमने पाया है। कविता से हमारा जीवन शुरू हुआ है। कविता को कहा जाता है इसको द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कन्वर्सेशन। वाक मतलब कथा। और इस कथा से ही शुरू हुआ है हमारे सभ्यता संस्कृति।
इसीलिए कविता ही जीवन है और जीवन ही कविता है। क्या आप मानते हैं कि कविता से लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है? देखिए, भाषा जो है, मैं तो कहा आपसे कि कविता ही मानव जाति की मातृभाषा है। तो भाषा जहाँ रहता है, जहाँ वहाँ माँ रहती है, वह संस्कृति रहता है। कविता भले ही लोगों को रोटी ना दे पाए, झोंपड़ी ना दे पाए, नौकरी ना दे पाए, लेकिन कविता कविता मानव हृदय को परिवर्तन कर सकता है। ये शक्ति कविता में है। वैसे भी आप देखा जाए कि कैलाश से लेकर के रोमान साम्राज्य में जब था, कैलाश से लेकर के महाकवि गति से लेकर के हमारे अब तक की बात अगर किया जाए, तो दूसरी बात रहा कि हमारे देश में जब ऋग्वेद शुरू हुआ, लेट नॉलेज कम्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कोने कोने से प्रकाशित हो, ज्ञान का प्रकाश हमें प्राप्त हो। तो इसमें तो सब कुछ है। तो ज्ञान ही यार। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, विहता करण उपनिषद में जो है, जिसमें हम हमेशा कहते आए हैं, उजाले की ओर जब हम कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो वो असतो असत्य है। ये, ये तो कविता ही है। असत्य से सत्य की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जी अंधेरे से उजाले की ओर। ये सब जब रहा तो कविता हृदय का परिवर्तन कर सकता है। भले ही वो जब भी देश में या किसी समाज में कोई अत्याचार अनाचार जब आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो सबसे पहले हम कविता की ही सहारा लेते हैं और कविता से शुरू करते हैं। प्रतिवाद भी कविता से होता है। वैसे भी हम और एक बात अगर गौर किया जाए तो देखा जाए कि हमारे देश में जो महाकाव्य पहले शुरू हुआ था, रामायण, उसमें जो कविता था, मान प्रतिष्ठान तमागम स्वास्वती समा, जैसे क्रौंच मिथुना देख मवती काम मोहितम। तो ये क्या था? ये तो प्रकृति था, हिंसा के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध। ये तो कवि ने उनको प्रतिवाद किया था। तो प्रतिवाद हो सकता है, कविता भले ही कुछ ना दे पाए, लेकिन मानव हृदय का परिवर्तन कर सकता है। ये लाखों हजारों सालों से चला आ रहा है, अरे यही परंपरा चलता रहेगा। आप देश विदेश के किन कवियों से प्रभावित होते रहे हैं? प्रभावित होने के कारण ऐसा है कि अनुप्राणित होते हैं हम लोग। तो पहले तो मैं अपने लोगों से, लोग बाग जो है, हमारे देश की जो आवाम है, उनका जो मेहनत है, कड़ी मेहनत, उसी से ही खून और पसीना से मेरा कवि हृदय संचित हुआ है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी कवि हैं, सभी से मैं अनुप्राणित हूँ। इससे मुझे कुछ ना कुछ पाया। आज जो लोग हमारे आगे बैठे हैं, वो कल से परसों से मैं सुन रहा हूँ सबको, उनके चेहरे देख रहा हूँ। तो ये जो चेहरा जो समय के वक्त के साथ साथ चलता जा रहा है, तो इससे तो एक अनुप्रेरणा मिलती है। मैं वैसे तो विदेश से देखा जाए तो खासतौर पर मैं पाब्लो नेरुदा पाब्लो नेरुदा का जीवन गाथा जो अनुस्मृति यानी मैमर्स जब पढ़ा था, तब से मैंने सोचा कि कभी, उससे पहले मुझे मालूम न था कि कवि कौन होता है। दरअसल कवि कौन है इस समाज में, जिसको इतना मान्यता दिया जा रहा है, इतना लोकप्रिय है कवि। उनका वो जीवनी पढ़ते ही मुझे मालूम पड़ गया कविता क्या है, और तब से उनका कविता मैं पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद तो कई कवियों का कविता मैंने पढ़ा है, लेकिन हर कवियों से कुछ ना कुछ मिला है। ऐसे देखिए, कविता एक परंपरा है। सारा विश्व में इस परंपरा को हम एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। भले ही हम कुछ न कहें या ना कहें, इस सन्नाटे के बीच हम जो सोच रहे हैं और घर वापस जाकर जो लिख रहे हैं, वही किसी न किसी की आवाज उसमें झलक रहा है, गूंज रहा है वो आवाज।
तो हर किसी से हम अनुप्रेरणित है, हर किसी से मुझे सारा बहुत कुछ मिला है, इसलिए मैं सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। जी, भारतीय भाषाओं की कविता के संदर्भ में असमिया कविता को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारतीय कविता मतलब महासागर, असमिया कविता एक नदी है। इस नदी कई नदियां, चाहे वो असमिया हो, बंगला हो, गुजराती हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, सभी नदी एक साथ जाकर बह करके महासागर में मिला है। तो भारतीय कविता एक महासागर है। भले ही हमारे कवियों को नोबेल पुरस्कार ना मिला हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ना मिला हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कवियों में कुछ भी नहीं है। अगर इन कवियों का कविता अगर सही तरह से अनुवाद किया जाए, इसको प्रचार किया जाए, तो देखिएगा कि आज भी जब भी मैंने सुना है कि जितने लोग यहाँ से बाहर गए हैं, पढ़ करके आए हैं, खासतौर पर देखिए 1989 नहीं 88 89 में 89 में एक प्रोग्राम हुआ था। अशोक वाजपेयी साहब ने कई लेखकों को लेकर के विदेश गए थे। उनका कविता लोगों ने इतना पसंद किया था, तो कई लोगों ने के साथ अशोक वाजपेयी साहब से मैंने पूछा भी था, साहब जी ने मुझे कहा था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय कविता एक महासागर है। इस सागर को मंथन अगर किया जाए सही तरह से, तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। इसमें आप असमिया कविता जो है उसकी जो मौलिकता है या एक अलग पहचान है उस पर उसमें कुछ बताएं। ये लिरिसिज्म है, लिरिसिज्म के गीतिमयता, इसके कारण असमिया कविता, बांग्ला कविता या हिंदी कविता या उड़िया कविता थोड़ा सा हटकर का अलग है। वो कारण है, उसका कारण है इसका मिट्टी, उसका आसमान, उसका चारों तरफ का परिवेश। इसी के कारण उसमें जो सब वो आया है, ये सब कुछ मिलकर के उसी तरह से लिखा है असमिया कविता को। और उसी में इसीलिए असमिया कविता जब पढ़ा जाता है, तो उसको जो ध्वनि शब्द शब्द जो सुनाई देता है, तो वो हमेशा बाकी शब्द से थोड़ा सा अलग होता है। लिरिकल क्वालिटी है जो लिरिकल क्वालिटी जाना जाए। आपका जन्म असम के एक चाय बागान में हुआ। चाय बागान के परिवेश का आपकी कविता पर क्या प्रभाव, मतलब इस पर बात बताएं। देखिए, एक कवि या एक लेखक जब लिखने बैठता है, तो लेखक जब बनता है उसके कई कारण होता है। एक तो उसके चारों तरफ का परिवेश, उसका माता पिता, उसके वंशज, उसके भूमि वास्तवस्था, उसके समाज वास्तवस्था, उसका काल काल निर्णय होता है, उसका इतिहास होता है। ये सब कुछ इस तरह से इतने चुपके से और इतने सक्रिय से उनको ढालते हैं, तो उसी से लेखक का वो जो लेखक सत्ता जो होता है वो बन जाता है। तो मेरा चाय बागान के जो परिवेश था, उस परिवेश से मैंने लोगों को देखा है, लोगों ने किस तरह भोगा है, किस तरह से वहाँ झेला है, वो सारी बातें मेरे कविता में कुछ न किसी तरह से आया है। दूसरी बात रहा कि लोग वहाँ शोषित है, वंचित हैं लोग, लेकिन वे लोग भी जानते हैं जीवन किस तरह से जिया जाता है। तो वे नाचते हैं, गाते हैं, त्योहार मनाते हैं। So amidst this endless suffering and plight, people know how to celebrate life and how to sustain in। तो इसी तरह से देखा गया है कि समाज में जो कुछ भी हुआ है, चाय बागान से मैंने यही सीखा है कि दुख दर्द जो कुछ भी हो, लेकिन इसको
छोड़ करके जीवन को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, इसीलिए इसको जीवन कहा जा रहा है। तो चाय बागान ने मुझे यही दिया है, तो इसी से मैं भारत को समझा हूँ, आया हूँ, आप लोगों को देखा हूँ, आप लोगों को समझने के लिए कोशिश किया हूँ। तो यही है, वही चाय बागान, वही छोटा सा गांव, वही करिए, बस इसी से मैं आगे बढ़ा हूँ। आपको कविता लिखने की प्रेरणा किस तरह मिलती है? जैसे विषय वस्तु का चुनाव शायद कैसे कविता करते हैं? मुझ में था, अंदर था कविता। कोई तो कविता नहीं बन पाता ना। ये तो जीवनानंद दास ने कहा था कि सवाई को भी नहीं, केव को भी। कविता शायद था। और ये कविता किस तरह से आया ये मैं बताता हूँ। तो पहले मैं तो कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन लेखक बनूंगा, कवि बनूंगा। करके उस दिन कल परसों जब मुझे पुरस्कार मिला, तब मैं सोचने लगा था कि यही था क्या मेरा, वही हकीकत नहीं था क्या वो तकदीर जो मुझे खींच कर यहाँ तक पहुंचा लाया है। मैं दरअसल कवि बनना नहीं चाहता था, ना तो लेखक बनना चाहता था मैं। दरअसल मैं बनना चाहता एक चित्रकार बनना चाहता था मैं। इसलिए बचपन से मैंने खुद बड़े भाई साहब जो बहुत अच्छे तस्वीर बनाते थे, उन्हीं से प्रेरित होकर के मैं तस्वीर बनाना शुरू कर दिया था। तब क्रेयन और पेस्टल ये दोनों मिलता था, उससे खुद खुद को सीखा, सेल्फ तक आर्टिस्ट। उस तरह से बहुत अच्छी तरह से मैं कॉपी वर्क करता था पहले। बहुत लोगों ने मेरा काम पसंद भी किया था, सराहा भी था। उस तरह से हुआ था। लेकिन अचानक मुझे तकदीर ने मुझे यहाँ खींच कर लाया और मैं कवि बन गया। और आप सबके, आप सज्जनों जो बड़े हैं मुझसे उम्र में, आप सभी, आप लोगों के सामने मैं बैठा हूँ और आप लोगों के आगे मैं इतना बड़ा बड़ा लंबी लंबी बातें कर रहा हूँ। यही था मेरा तकदीर। तो मैं आज भी जीवन के प्रति उस तरह से मैं खुद को इस तरह मानता हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं सबके प्रति। सबके प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो कवि बनना नहीं चाहता लेकिन वो कवि बन गया। और जो चित्रकार बनना चाहता वो ना तो चित्रकार बन पाया, ना पाया। इस तरह से हुआ। शायद हकीकत ही ऐसा है हमारे जीवन में कि आप जो बनना चाहें, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। और जो नहीं करना चाहते हैं दरअसल वही कर डालते हैं। इसी तरह से होता क्या आपको लगता नहीं है कि दोनों ही जो माध्यम है एक जैसा माध्यम तो है? दोनों एक ही है। देखिए, जब अगर हम देखा जाए अगर देखा जाए तो देखिए चित्रकारी, संगीत और कविता एक साथ ही आया है। जब 1994 में हम लोग भीम बैठका गए थे, और जब वो गुफा चित्र देखा, और उसके तुरंत बाद जब वहाँ भोपाल से हम लोग दिल्ली लौटे, तो दिल्ली में मुझे नीलमणि फुकन सर ने एक किताब पढ़ने के लिए कहा, और वो था प्रिमिटिव आर्ट। तो प्रिमिटिव आर्ट दरअसल एक किताब इतनी अच्छी किताब है कि इसको सबको पढ़ना चाहिए। उस किताब में प्रिमिटिव आर्ट की आदि अधिक आदिम कला के बारे में, बल्कि उसमें आदिम साहित्य के बारे में, आदिम कविता के बारे में एक लंबा अच्छा लेख है। प्रिमिटिव पोएट्री के बारे में लेख है। तो इसीलिए, हालांकि मैंने कहा आपसे कि कविता कभी मैं बनना नहीं चाहता था, चित्रकार बनना चाहता, लेकिन चित्रकार बन नहीं पाया, कवि बन पाया। और चित्रकारिता छूट गया मुझसे। लेकिन दरअसल बात यही है कि तीनों एक ही साथ आए हैं, तीनों एक ही साथ। शायद मेरे अभी कविताओं में अगर गौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वही चित्रकारिता का झलक दिखाई जाता है। बस इतनी सी बात। पूर्वोत्तर भारत की कविता का अपना एक अनूठा चरित्र है। असम के साथ साथ पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की कविता आप तो पढ़ते ही रहे हैं, उसके बारे में कुछ?
की कविताएं खासतौर पर मैं उड़ीसा और बंगाली कविता बहुत ही समृद्ध है। बंगाली कविता, उड़िया कविता भी बहुत ही समृद्ध है। तो पूर्वोत्तर अगर कहा जाए तो बिहार है उसमें शामिल, झारखंड भी है, कार्ड भी छत्तीसगढ़ भी है। मणिपुर में ना वो तो जनजातीय कविता है, फिर भी वो कविता ही है, हमारे ही धरोहर है। जनजातीय कविता हो या लोक कविता हो, वो हमारी धरोहर है। तो इसमें अलग अलग सब थोड़ा सा एक दूसरे से अलग है, लेकिन वो हमारे सारे भारतीय कविता या हमारी विश्व कविता का एक नया पहचान है। इसीलिए पूर्वोत्तर की कविता में क्या है, ये जो जनजातीय कविता है उन कविता से हमारे जो आधुनिक कविता बना है, इसमें दोनों का देन है। दोनों का देन है, लोक कविता का वो देन है और जनजातीय कविता, ट्राइबल पोएट्री, फोक पोएट्री, दोनों का देन है मॉडर्न पोएट्री। क्या आप जनजातीय कविता से कुछ प्रभावित है अपने रचना? जनजातीय कविता मैं तो खुद अभी अनुवाद कर रहा हूँ जनजातीय कविता। पहले जब मैं काफी कविता, काफी अगर वो नाम मुझे नहीं देना चाहिए था, लेकिन नवकांत बरुआ साहब ने मुझे कहा कि अगर अनुवाद हुआ है तो इस तरह से काफी नाम दे दो। काफी मतलब काफिर, काफिर ये डेडिकेटेड वर्ड है, अपमान, अपमान सूचक शब्द है ये। इसको खासतौर पर अफ्रीकी लोगों को यूरोप वाले ने कहा करते थे, वहीं से काफिर से काफरी बना है। तो दरअसल वो था अफ्रीकन लोक कविताएं और प्रेम संगीत। ये चार्लोट लेस्लाव ने चारों तरफ से संग्रह करके इसको सजाया है। वो कवि नहीं है, वो कवि है लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है। ये हजारों सालों से लोगों के बीच चला आ रहा है, एक परंपरा है। लोक कविता इस तरह से है, लोक संगीत, प्रेम संगीत भी उसमें। उस कविता को जब मैं अनुवाद किया अपने भाषा में, तो मुझे लगा कि क्या पूछ रहे थे, जनजातीय कविता क्या, तो वही था जनजातीय कविता। उसके बाद मैं ये अनुवाद कर रहा हूँ नेटिव अमेरिकन पोएट्री। तो जब मैं पढ़ रहा हूँ ब्रायन स्पेन और जॉन कॉलियर के दोनों किताब, इतना सुंदर है तो आप सोच नहीं सकते। हमने हिंदुस्तान में क्या पाया है विश्व के बारे में। हम अब चार ही युगों का यहाँ बटवा विभाजन किया गया है। क्या क्या, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। लेकिन लैटिन अमेरिका पोएट्री में क्या है, आदिवासी अमेरिका कविता में 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला सूर्य, दूसरा सूर्य, तीसरा सूर्य, चौथा सूर्य, पांचवा सूर्य। ये पांचवा सूर्य सोलार ईयर, ये सोलार ईयर में क्या परिवर्तन हुआ है विश्व में, उसी को डाला है उसमें। और एक कविता है, हर कुछ कविता के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। पूरा वो पंडित नेहरू के जमाने में हमारे ट्राइबल अफेयर्स के एवरियर की जितना भी रचना संग्रह है उनको संपादित किया है नूरी रुस्तम जी ने। तो साहित्य, हम इतने खुश नसीब हैं कि साहित्य अकादमी ने उनको अनुवाद भी किया है। तो महाश्वेता देवी ने बंगला में अनुवाद किया है, शायद हिंदी में किसी ने किया होगा। और कविता, तो उसमें जो कविता दिया है, खासतौर पर महाश्वेता देवी के जो अनुवाद जी जो संपादित किया है, उसी किताब में 8 कविता लिया गया है। कविता, एक कविता के बारे में मैं कहना चाहूंगा। जैसे रात को एक जनजातीय युवक यानी युवती दोनों जंगल में घूम रहे हैं, जुगनू चारों तरफ घूम रहे हैं, झरने के किनारे वो बैठे हैं।
और अपने आप में मग्न है। जब सुबह होने लगा है तो नाराज दुखी है कि आप मिल नहीं पाए, विछुड़ जाते हैं। इस तरह का कविता है। अब जंगल के बारे में, जो सौंदर्य के बारे में जंगल इतने खूबसूरती से उसमें उसने अनुवाद किया है, तो वो पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जनजातीय कविता किस तरह से इतना समृद्धशाली है। आपको अपने 14वें कविता संग्रह फरिंग बुरे बटौर कथा जाने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या आप इस संग्रह में शामिल कविताओं पर कुछ रोशनी डालें? देखिए, फरिंग बुरे वाटर कथा जो है, ये मैं 1987 की बात है। 1987 में जब हम लोग पर्यटन विभाग में थे, तब सरकार ने एक पॉलिसी बनाया था और जितने भी लेखक अफसर थे, अधिकारी थे, उनको 2 गोट में पूर्वोत्तर दिखाने का फैसला हुआ, लिया गया। इसलिए हम लोगों ने बाय रोड रास्ते, सड़क से होकर के, बस से होकर के हम लोग चारों राज्य घूम आए थे। तो जाते वक्त रास्ते में जो कुछ भी दिखाई दिया, वो सब कुछ मैंने नोट करते चला गया था। डायरी से इस कविता की बात शुरू हुई। और जब 87 के बाद जब हम लोग लौट आए, लौट आने के बाद 2015, 16 और 17, इन तीनों सालों में उन डायरी से जो कुछ मैंने किया था, उसको मैं कविता में ले आया। और इसको कम से कम 10-12 बार इसको संशोधित करना पड़ा, इसको काटना पड़ा, सुधारना पड़ा। क्यों किसने किया, ये एक बात है कि पूर्वोत्तर की जो उथल पुथल है, जो राजनीतिक वातावरण है, उसमें सब मैंने उसी तरह से लाया था। लेकिन मैंने देखा कि अगर इसी तरह से मैं लूंगा तो कई तरह से मैं राजनीतिक या किसी तरह से मैं पहुंचाऊंगा और मेरे मुसीबत मोल देना पड़ेगा। इसीलिए मुझे बहुत कुछ सुधारने के बाद 2018 में एक प्रकाशक ने कहा, मांगा तो इसको दे दिया। वो एनएल पब्लिकेशन प्रकाश, उन्होंने ये कविता प्रकाशित किया है, 2021 में प्रकाशित हुआ। उसी तरह से सारी कविताएं उसमें दी गई। लेकिन एक कविता, हे अरण्य हे सन्नाटा, इस कविता में मैंने एक ही लाइन नेटिव अमेरिकन पोएट्री यानी आदिवासी अमेरिकन कविता से लिया है। तो इसीलिए मैं कविता के शीर्षक के तुरंत बाद उसको मैं वहां दे दिया गया है कि एक अमेरिकन, आदिवासी अमेरिकन कविता की से इस कविता में है। तो उस लाइन है कि इंसान की गलती ने मुझे गलती करने के लिए मजबूर किया। इंसान की गलती, इंसान की प्रवंचना से मैंने प्रवंचना करना सीखा। इंसान की छल कपट से मैं छल कपट करने के लिए सीखा। मैंने सीखा और सीखा और सीखा और खुद खुद को संभाला। मैं नहाया, हे सौंदर्य, मैं लौट आया, हे सत्य, मैं वापस जा रहा हूँ, ये सन्नाटा। इस तरह का कविता है। बहुत सारी हमारी बातचीत हो गई। अब आप, क्योंकि हम लोग बातचीत के अंतिम चरण में आ गए हैं, नए कवियों को आप क्या परामर्श देना चाहेंगे ये इस बात? लेकिन मैं खुद लिख ही रहा हूँ और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं किसी को कोई परामर्श या कोई सलाह दे मैं पाऊँ। मैं तो खुद ही
एक मामूली इंसान हूँ, मैं कविता कर रहा हूँ, भले ही मुझे साहित्य अकादमी क्यों ना मिले, लेकिन दरअसल तो हम एक मामूली इंसान ही है, कर तो रहे हैं, लेकिन क्या कहें, कवियों को क्या कहें, सब कुछ तो अपने आप को करना है। किसी किसी को बताने से नहीं होता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमारे असम में जो हो रहा है, बहुत सारे कवियों अब निकल आए हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ये बहुत ही मजेदार बात है। और आशा है कि वे लोग और आगे लिखते चले जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि कल या परसों दोनों दिन जो हम लोगों ने यहाँ रह करके जो सुना, आज चर्चा हुई, उससे एक बात पता चल रहा है कि हमारे परंपरा और मानवता से बिल्कुल कट गए हैं। आधुनिकता या मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म, इसके पीछे इस कदर भाग रहे हैं सब लोग कि अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपनी मानवता को भूलते जा रहे हैं। तो हमारे खासतौर पर मैं इन कवियों को नहीं, मेरे असम के कवियों को मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों से जुड़े रहे, अपने जड़ से जुड़े रहे, क्योंकि जड़ से कट गए तो कुछ भी, जड़ से जुड़े रहे और काम करते रहे। और खुद को खुद को टटोलना चाहिए, खुद को खुद का समालोचक खुद ही है, कोई समालोचक कहे या ना कहे। देखिए मैं जब किया और आज तक बहुत सारे समालोचक ने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। आज पुरस्कार मिलते ही सब लोग मेरे घर पास आ गए हैं। तो इस तरह से होता है, कवि का जीवन में इस तरह बहुत सारी घटनाएं घट सकती है कि इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और कवियों को इसलिए मैं युवा कवियों को खासतौर पर मैं कहूंगा कि घर से जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति परंपरा से जुड़े रहिए, उसको सम्मान कीजिए और एक दूसरे को सम्मान करना सीखिए, बड़ों को सम्मान करना सीखिए। बस सब कुछ अपने आप हो जाए। पढ़िए, खूब पढ़िए और सोचिए और घूमिए बस। सुंदर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम को धन्यवाद। धन्यवाद। There were a lot of lessons to be learned from Samir Kumar Tanti ji, and especially what he said at the end, पढ़िए पढ़िए और खूब घूमिए, उससे आपको लिखने की प्रेरणा मिलती है और जीवन की प्रेरणा मिलती है। एक आम इंसान अपने अंदर पहुंच जाए, कभी हो ना हो, अच्छा इंसान तो है। On that note, I would also now like to request Sri Krishna Dumi to join us on the dais, please. Sri Krishna Unni is a distinguished creative writer in Malayalam and English. He is the author of 5 books, including the award-winning novel Oru Documenta. His recent project is on contemporary art practices in India, resistance and subversion. May I request Sri K. Jayakumar to join us on stage, please? He is an eminent Malayalam poet and writer with nearly 50 books to his credit. He is the recipient of the Sahitya Akademi Award for Keshani, a collection of 40 exceptional poems with a plethora of original images, subtle nuances
of expressions, making them truly ingenious and are considered to be an important contribution to the genre of Indian poetry in Malayalam and indeed to Indian poetry per se. So it's over to you, sir. Thank you very much. Well, it's a great honor and a great pleasure to be in Sahitya Academy. And at the outset, I would like to thank the eminent novelist, Mr. Ramanuni, and also Sahitya Academy for giving me an opportunity to have a face-to-face conversation with Sri Jayakumar, who in fact won't require much of an introduction to many of you, but still my duty is to introduce a little bit. It's better to introduce Sri Jayakumar what he is not rather than telling what he is. Uh, Sri Jayakumar has been in the civil service for quite a long time, and he had an amazing career across all over India. Apart from that, he hails from a family which is highly artistic. His father was a renowned producer as well as a director. Plus, he was also having thousands and thousands of literary wounds, not only just poetry, which I will be elaborating in course of our discourse. And he is having a collection of around 10 major poetry collections. He has translated eminent poets like Rabindranath Tagore, Khalil, as well as a few others. He also has been attempted in translation. Apart from all these things, he is an eminent Malayalam film song writer and perhaps a composer also. And I would like to take this opportunity to mention the fact that after his superannuation from the civil service, Sri Jayakumar was the vice chancellor of one of the eminent universities, budding universities of Kerala, Malayalam University, which is situated in Tirur. And this university, to a certain extent, has been mooting the idea that Malayalam is a Shrestha Bhasha. Sri Jayakumar has won a number of awards. I'm not going to get into the details of the awards. Those who are interested can easily get it. But with certain kind of tinge of self-promotion, I would tell you, there is only one award which I share with Professor Jayakumar, but not in poetry. That is Abu Dhabi Shakti Award. I got it for my novel, and he got it for his poetry collection. With that, sir, we will start our uh, face-to-face conversation. As usual, and as is a custom, like most of the the face-to-face conversation, it's what we usually ask. Would you like to tell this audience your early attempts to write poetry? How did you start writing poetry? Your interest in poetry? What generated your interest in poetry in your boyhood days? And how you started writing? How did you come to the art of poetry writing? Thank you, Professor Krishnanandi. It's a very dangerous question to be asked to any poet because he can take all the time available to explain that. So I shall curtail myself, use my civil service to write a proceed. Say that my poetical career, because that is the theme, has two phases, I may say so. First phase, a very juvenile phase. Like all of us sitting here must have attempted poetry in our adolescent ages when we are in the colleges, falling in love with a girl. About that girl, she jilts you, you write a poetry. For that. Anyway, that was the phase where I thought I'm a poet. Then I came across wonderful poets like Kumar, for example, whose idea of poetry is so profound. So he made me think, what's the kind of poetry you are writing? Poetry is something. So that was first goal. I slowly stopped writing. Then I was a student of science in my PhD. After that, I shifted to literature. I wanted to study literature. So I took a course in Malayalam, in MA English from Nagpur University for 2 years. And that exposure, that academic proper exposure to English literature, coupled with my awareness about Kumaranathan and his genre of poetry and his idea of poetry, and my exposure to Tagore, all these things were still poetry.
All these things made me sort of very, very conscious. Something in me told me that, look, what's the kind of purity you are writing? Stop it. So I stopped writing, to be frank. Then, incidentally, I'm not explaining my biography, but in the meanwhile, I got into civil service, 1978. Then I was not writing it at that time at all. Then slowly, as a young fellow, the trappings of power, you suddenly feel that you're a very important person around. So this poetry reasserted sometime in 1982, 82, 84. Then that why? Because at that time a great conflict has occurred in me. No true poetry comes without a conflict. People ask me, "You are an IAS officer. What is your conflict?" Now that precisely why I say this is that is precisely my conflict. I suddenly realized that I am slowly becoming part of an elite, a power elite. I don't want to be. I'm a disciplined civil servant. That's a different thing. But inside me, I don't want to get away from life. I don't want to be elitist. And the more I get into the service, I get part of the power structure. And on the other hand, there is a world which I left before getting into the service. That is the world of the ordinary people with their ordinary joys and sorrows and struggles. And I want to listen to that. So this struggle, am I getting estranged from the uh, sad music of humanity, as Arnold would say, and getting estranged into a very elitist kind of life, which I didn't want. So on the official front, of course, I do my job for a living. That's one thing. But the poet in me discovered that there is a conflict. That conflict was the my new initiation into poetry. I abandoned all those Rosie earlier this thing and started looking at poetry as a very, very different kind of expression where I have to express humaneness or humanity. I think that is the strain which I have been continuing for the past 35 years in pursuing poetry. That is an excellent, observation regarding how and at what point of time a civil servant can unrobe himself or herself to that of the common man. Thank you very much for that comment. And it is evident in your early collections that the clear the motives and agendas of the late modernist poets are very well reflected. So in Malayalam poetry, if you look at the early modernists, of course, we are having Ayyappa Panikar, who inaugurated with his magnanimous poem Kurukshetra, and later then Kakkad, then Madhavan Ayyappath. However, in the 80s, when you were writing, it is at the height of modernism. Okay, the early modern phase of Malayalam poetry has gone, and the height of early modernism, late modernism. So, how do you locate your poems in conjunction with the late modernist poets at that point of time, like Atur was writing, for instance, KGS, Sachidanandan, and all these eminent poets are there. So, how do you locate your trajectory in the line of the late modernist poets? Thank you, Sunil, for asking that question because that question has to be answered. I think I have to answer myself. When I entered poetry, as I said, in the early 80s, I was starting to write. It was a tremendous amount of trepidation that I was entering poetry. One, I have a fair idea about what modern poetry is about, what European poetry is about. Fairly good idea. I started research on T.S. Eliot for a while. I did not complete it. I did research before I got into the service. For 1.5 years, I was a research scholar. I studied Eliot fairly well. In those days, Western was a great fascination for me. Kurukshetra, of course, is not modeled on that, but inspired definitely by that. So, modern Malayalam poetry at that time was sort of brimming with poetic experiments and alternate voices and old clashing with the new, and it was I think the poetry, the poetic landscape looked like a battlefield. On the one side, there was the traditionalist who said that you are speaking with rhythm and meter is not. He's antithetical to Malayalam poetry, and of course, Ayyappa Panikar, Kadamanita, of course, writes in rhythm as well as otherwise. Sachidanandan, all these great surge of modern Malayalam poetry. As I said, with great amount of trepidation, I started because I have fairly well educated myself in Maharashtra and while living in Shankarakurpa, all my grand predecessors. And I can write in meeting also. Not only that, the modern poetry was bringing new experiments in themes and diction and everything. Correct. Yeah. So I had to choose with great amount of difficulty.
I have to find a voice prediction of myself. I don't say that I succeeded initially, but slowly, slowly, that's struggle. I did not want to toe the line of any particular poet. I did not want to be called a modernist or a romantic, nothing like that. I wanted to be myself, to be Exactly. frank. Exactly. Although I did not have that kind of confidence at that time, but looking back, I think I never imitated somebody. I did not want to write like Sachidananda or like somebody, but I wanted to express myself, but in a contemporary idiom. I may not use the word modern, but in a contemporary idiom. The point need not be artificially or willingly or try to be modern. If you are living in your current times, following the traditions of your poetry, you will be modern, no doubt. You cannot be ancient because that is the ethos of your time. If you imbibe the ethos of your time and follow how your poetry has shaped up in your life, your language, naturally you cannot go back to a Chanambula idiom Exactly. in 1980, isn't it? So I did not follow any kind of, what should I say, your theoretical constructs to be Right. a modern poet, but I followed my heart. I wanted to express myself in a contemporary idiom. Right. So it reflects in your meter or lack of meter. It reflects in your imagery. It reflects in your vocabulary. Right. It reflects in your ironical standing. All these things, you have to be contemporary Right. rather than being modern or postmodern or whatever. These are all your domain, not Exactly. mine. They're all Okay. your critics' domain. You call it what you like, but we write only the way we want. Space and geography occupy a very key position in your poetry. There are known spaces that may be something which you have achieved through your wide travel. Space, various kinds of space. At the same time, there are certain spaces and places which you haven't seen also. So, Mike, you're written on Gaza, you're written on, the many places in which appear in Mahabharata. There are so how important the space, topography, and a place in writing poetry. How It's an idea I have not thought about. I have written about Khajuraho, for example, I have Khajuraho. written, Exactly. and about even Shangamugam in Trivandrum, Yes, I have yes, written. absolutely. I think there are a couple of English poems I have written on Hampi also. Even in Myanmar, when I went, there was one place, which I forget the name. So some places do excite me because when you are a different place, I think you are a different person. You are not fatigued by yourself. When you are in a different environment, I think your poetic impulses are awakened because you look at that place with the freshness of your imagination, and that freshness combines with something that was welling up your mind, and a new poetry comes up. It's not a conscious decision to write about distinct geography, but I think poetry gets triggered when you Right, are in an alien landscape. There are a right. lot of European landscapes also, Absolutely, where absolutely. I Coming think up. Right, I lived in Ireland. I still remember right, 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 with white sands, swans, and black right. bridges. I still remember that photo is etched in my mind. Maybe because there are a lot of emotional inputs also. Could be. At the same time, there are a lot of fascinating mythic characters who are appearing in your poems. Some of them with the titles Jadayu, Draupadi. You have written on Draupadi. There are many poets who have written on Draupadi. There are many writers who have written on Draupadi with various twins, including Mahashoda Devi. In Jadayu, you make the point very, very clear that Jadayu finally is looking at Ravan to have a quarrel. All right, not Ram to have a quarrel. All right. So, how important these myths and the folklores and these characters are they, as far as you as a poet is concerned? On the one hand, I should say that receiving the Sahitya Academy Award on Women's Day was not, I think, fate has intended it that way because several of my poems are on women. I think I have hardly ever written on a male character except for Karna from Mahabharata. Other than that, I don't think male characters have excited me. I think it is the feminine Right. through which the syntax changes. Syntax of life changes. It is mostly through the feminine. All So right. the feminine has fascinated me. So Okay. I have written about Madri, I have written about Draupadi, I have written about Sita, lot of characters because it's a rereading. If it is only to reproduce what Sita is in Ramayana in the normal way, I don't have to write it. So when a character, for example, Sharmishta, I have a poem called Sharmishta. Yes. Yes. Sharmishta.
who they married, and Yayati sort of won his, he rejuvenated himself to enjoy his life, but she could not touch him. It's a poem like that, Sharmishta, which is a very favorite of mine. Actually, it is inspired by a play by Banu Bharati, where Sharmishta, she can't touch her husband, who is come reinvigorated with the youthfulness of his son. She says, when I touch your skin, I'm touching my son. Please go away. I don't want to touch you. You don't look at me with your carnal eyes, because your son's youthfulness is in you. I can't have anything with you. So that kind of, the feminine principle that Right, way, right. I found it very strong. Very strong. And you have written on Shikandi as well. It's a Shikandi, of very, course. very important Shikandi, of poem. course. Shikandi, so the gender conflict also, becomes in a different way. It's Shikandi, resurfacing. It's resurfacing. because Shikandi, again, as the title of the poem is As Shikandi Enters the Yes, Battlefield. yes. Uh, as Shikandi enters the battlefield, different, what should I say, turmoils take place. Bhishma recognizes, yes, she has come, Shikandi has come, my end is near. Arjuna now understands that with Shikandi in front of the chariot, Bhishma will not take the weapons, so I can. Right. But is it honorable for me Right. to win a war like with Shikandi in front of me just because Shikandi is used as a shield? It's good for me, but his inner conscience says winning the war is more important than your petty. So fight it. Shikandi has her own arguments, where she says, I want to punish you Yes. because you have treated the female body or me uh, as if I am a kingdom without a ruler. Right. You thought I am a kingdom without a ruler, you can do whatever you want. So you have to pay for it. Right. So I was fascinated by this determination of Amba. Right. Her, actually, not that I, not surprising that I have many girlfriends, because I love the feminine principle. I love the feminine That's very principle. interesting, actually, how these feminine characters were long forgotten or not properly taken care of or brought into poetry. Now, let us come to the point of ecology. Ecology also plays a very, very crucial role. In fact, a rampant role in your poetry. For instance, the poem like Dragonflies don't come to Plachimada. Lachimata, It's yes. a poem which completely intrigued me. And for the audience, Plachimada is in Kerala, is a geographical location in Kerala, which had seen severe starvation and also into the dearth of water. People had been dying there. Then there was state-related issues My there. Coca-Cola company Exactly, extracting Coca-Cola groundwater. companies. So that is connected to the new liberalization, globalization, and a whole lot of other range of issues. So how prominent ecology to Incidentally, Mr. Krishna, I was responsible as a civil servant to write a report on Pachimada. I was the chairman of the High Power Committee who inquired into the whole thing, agitation, and recommended to the government to have a tribunal by which the aggrieved parties, the people, should get their fair amount of compensation from Coca-Cola. But then that was defeated. Of course, the tribunal was formed, never came into existence because it came to government of India for approval never came. Anyway, the suffering goes on. But having seen Pachimata as a typical case of extraction of human lives, not water, but extraction of the vitality of human lives by the corporate greed. That Pachimata is a very dry belt. Having a factory for your soft drink factory in a dry, it's a travesty of justice. Anyway, now I could relate to the sufferings of these people and the indifference of state power towards absolutely, that suffering, absolutely. whether it is Pachimada or whether it is Kasargod, where endosulfan victims. These are Indocile. all Kerala-based instances. So the victim is victim; she or he suffers, Right. and the charity of the state goes on. Right. So, in environmental issues, ecological issues, like the feminine principle, have been very close to my heart, and I think every poet feels it in their bones to flag this issue as the question was asked to the earlier poet. Uh, you know, Sumalji. we may not have any solutions to any problems. No poet can suggest any final social, ecological, political solutions. But then we can flag the issues. Right. We can flag the problems and say that, look, like Deruda says, there is blood in the street. Like we can show blood in the street. We can show that, yes, here it is going to be catastrophe. Please do something about it.
That kind of sensitization, that kind of flagging is our vital duty, and if you don't do it, you are not a point. Right. Sometimes some individuals and events turn out to be to have a particular reaching function. For instance, individuals like Jagadish Sri Kumar, Mavenikira Ramachandran. Of course, these are very, very important cultural figures in Kerala. Jagadi Sri Kumar was a brilliant actor, but unfortunately, he is known as a comic actor in Malayalam film. But in fact, Jagadi could have risen, to great heights. He is an amazing actor with, amazing skills. And what make you, write poems on these particular people, Mavelikiri Ramachandran, Jagadi, as well as many others? I can point out many, many. But Yeah, they are not contemporary people. They are not icons like Mahabharata characters, but they are all in our surrounding. Jagadish is my college mate. We studied right, together. No, here Jagadish Kumar is only a trigger for me because he is into a so he is not conscious. He has lost his memory. right. He can't I recollect know, I anything know. after an accident. He's still alive. He doesn't recognize people like me also these days. So his memory has gone. Now, the purpose of the poem is to convey the kind of devastating changes that are taking place in our environment and the need for adjustment. The kind of changes in morality, changes in perceptions, the kind of insensitivities that have cropped up in our society. I wanted to showcase all these in a letter form to Jagadish Kumar, who has lost his memory. So the thing is that regain your memory and come back, Jagadish. Please be aware of your old tricks. World has changed. World has changed. Exactly. So I wanted to showcase the changes. I thought this is a good format, and Right, also my homage to Jagadish. right, right. And about the Mahaviri and Ramachandran, it is not surprising that we talk about him, invoke his memory in Delhi, where he spent a lot of his time as a on the radio. Exactly. Mahaviri Ramachandran is an ordinary person. He has no family. He used to be everywhere. Like a wind traveling everywhere. He is everywhere. See you next day, you'll be seeing him in a coffee house. He'll be walking through the streets of Trivandrum. And one fine morning, Mavelikar Ramachandran disappears. Nobody knows. Somebody said he has gone to meet his distant relative in Bombay. He has. Mavelikar Ramachandran just disappears from the scene. Investigation, nothing. Kill him because he has nothing. He's a fakir. So I just wanted to raise this question very. I found it very interesting. Interesting in the sense disturbing. So that is my again relation. I am establishing a bond with him. In this kind of a dialogue, you might have noticed that Sir was speaking about coffee houses. Coffee houses have got an a very interesting cultural history in the corpus of India, and he has written recently a poem called "A Queen in the Again in Coffee." coffee house. In the coffee house, and it's full of irony. Where usually the kind of people whom we meet at coffee house are the intellectual kind of people, the kind of the revolution which they are having at the back of their mind and all. How is these kinds of ironic twits that appear in your poetry as far as these cultural spaces are concerned? These are all places where we must have frequented coffee houses as young people, full of energy and trying to change the world. We know Che Guevara, we know Nietzsche, we know Croce. We know how to change the world. Only these fools know how to change the world. That is the kind of spirit that we had when we were drinking endless cups of coffee in the coffee houses and talking all kinds of stuff. Looking back, yes, at that age, you ought to have done it. You should not behave as you behave now at the age of 20. You did the right thing. Also, people come and talk, but they do not talk about changing the society or changing the world. They are talking about new technologies, artificial intelligence, coding, all these things. Absolutely oblivious about where the society is going, oblivious of the suffering of society. They're in a cocoon. So, coffee house also juxtaposes two situations in Right, life, right, and right, you are a witness to both the situations. I found right. it very interesting. Yeah. You have also written a novel, Dayanadi the Hridayam, The Heart of Dayanadi, which is a very important text for me. That's all about the life and times of Emperor Ashoka, and you draw you in the novel. The pitiable picture of how Kalinga looks. But one thing which struck me in the novel is the appearance of the madman. Okay, there is a madman who is appearing. He cannot articulate properly, but yet by looking at the carcasses around and by looking at the widow, those things, he tries to mumble. He crosses the threshold of madness. What made you think of Ashoka and also Kalinga?
and also to write a fiction, not a poem, not a big poem. The madman actually crosses the threshold of madness to become a prophet. Yes, Because the prophet stage is beyond madness. yes, It is yes. meta madness, if I may use a new word. So that is the prophet. He prophesies. No, my fascination with Ashoka is not that what he did as Emperor Ashoka the Great. That, of course, all of us have read in the textbooks or in books. But then my mind was fascinated by that one particular moment in his life, whereas a very triumphant emperor, triumphant king, subjugating Kalinga after a great resistance, like Vietnam's resistance to America, he subdues Kalinga. And I was reminded of one sentence which I learned long ago. We don't remember most of the stuff we studied in our classrooms, but there was an essay by H.T. Weiss, which I studied in my pre-degree class. Maybe from the pre-degree classes, this is the only thing I remember. Where he says, rarely in history there is an emperor who, in the height of his triumph, undergoes introspection and transformation. Right, right. Triumph does not make you introspect. It is defeat that makes you introspect. That theme somehow got stuck with me. And when I visited Odisha, I saw this river, which was very meaningfully called Daya Nadi, Daya, Yes, yes, yes. River Daya. Daya in Malayalam, as you know, Daya is compassion. Compassion. And Ashoka transforms himself into a compassionate being, thanks to Buddha's influence. So my focus, or if I may use a cinematic terminology, the camera of my mind zooms into his mind, Yes, into Ashoka's mind, and tries to understand what must have triggered this kind of introspection. Not only introspection uh, leading him to not renounce his victory, but transform the victory into a kind of moral penance, transforming entire administration. That is something remarkable. It's not easy for a king. So I was fascinated by that change. And so I had to create imaginary scenes, imaginary characters who borders on madness, but nevertheless a prophet. right. And that is the interest. Even now, this transformation fascinates me. That's very interesting. In Malayalam literature and in Malayalam poetry, very few Malayalam poets can be, very few can succeed as good Malayalam film songwriters. Of course, we had a plethora of Malayalam poets who succeeded. For instance, Vailar Ramavarma, O.N.V. Kurup, and the next person, if anyone asks, perhaps it will be you. And we have very good Malayalam poets who miserably failed as film songwriters also. Uh, One good Malayalam poet right now, who is also a very good film songwriter, is my close friend. We write poetry together. Is Rafiq Ahmed. How do you manage the language of writing film songs and at the same time writing poetry? See, these are two things. As O.N.V. Kurup was fond of saying, Malayalam film song is applied poetry and all that. I would say that it is a commissioned work. As a as a painter, you paint for your joy, but there are commissioned works also. So somebody here, so it's a commissioned work. The diction of film song is 25 years older to Malayalam contemporary poetic fiction. If I am aware of that, then there will be no contradiction. I should not be writing poetry using the diction of my film songs, nor should I be writing some film songs in the diction of my poetry. In fact, when I write some of the film songs, one of the biggest concerns most of the time I hear is that standard would its standard is high. You bring it up. You bring it up. Malayalam film songs, or for that matter, any film song, is 25 years behind you in the choice of imagery, in the choice of diction, everything. Because after all, it is meant for a different purpose. You can't go and argue, but that is what they want. It's a commercial work, mind you. Therefore, you write what they want. You do the craft of writing it. So you write it, but then within that, you develop your own fiction, your own diction, which is what I have managed to do. Maybe it is romantic, no doubt. I will not allow that kind of diction in my poetry. As I said, it has to be contemporary. Whereas film songs, it may not be as old as Vaila Ramavarma, P. Bhaskar and Bate, but I have tried to develop my own diction, which is neither too old nor too postmodern.
would you say this is true when you attempt a translation also? Because when I read Gitanjali, one thing I noticed was you try to maintain a kind of a diction which can be equivalent to a wider Malayali audience. So the translation is not meant for a peculiar kind of a target audience, a wider Malayali audience, and you try to maintain a kind of a rhythm also in Gitanjali, because Gitanjali has been translated before also, but there are different ways of approaching Gitanjali, right? And we had a plethora of Bengal translations into Malayalam by many others. There are 23 translations of Yes, Gitanjali yes, yes. In Malayalam from eminent poets like Shabira Prabhu, Exactly, exactly. He all was the people have first done. person. Chandraguru was the first person who Yes, and started. most of the people have translated the Gitanjali in Bengali, which is not the Gitanjali which has been Nobel Prize No, no, no. winning. That's not That's a combination of 13 words. Anyway, coming to the translation, I should pay my tribute to Dr. Ayyappa Panikar for making me do a good translation. I translated Gitanjali out of my great fascination for Tagore. Uh, I gave it to Ayyappa Panikar for writing a forward. With his characteristic smile, he returned it to me saying that wonderful translation. It would have been more wonderful had it been 50 years ago. That is Ayyappa Panikar. 50 വർഷത്തിന് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. Absolutely. He said, sir, what is the problem with this translation? He said, your diction is old. Your diction is old. Why are you translating? You are translating for the new reader, not for the reader who lived in 1945. Okay. So you, so that was a lesson for me in translation. Translation, a great book has to be translated for generations. For the new generation to translate. So therefore, translate in the language of the new generation. But I argued with him. He said, sir, Tagore is romantic, so my diction will have to be romantic. He said, who said you have to be unromantic? I am only talking about the diction. You can still be romantic. You can still be Tagorean. So you believe it or not, it took me exactly 1 year to more than Yeah, I 300 swear, I days to swear. translate 103 I swear, verses. I swear. And when I gave it back to Ayyappa Panikar, I was on a sabbatical in UK. When I came back, I gave it to him. He was very happy. He was very happy. He offered to write a because he said, "This is it. Now I can relate." But then, excited to say that my homage to Ayyappa Panikar, the spark of a genius. Of I tell course, you, very tough Tagore taskmaster. writes, "Thou hast made me endless." The first sentence of Gitanjali, "Thou hast made me endless." I have translated Anga in Anashwaranai Srishtichu. So Panikar sir asks, endless in time or in space? Huh? Is there a dimension? I never thought about that. Endless in time or space? Endless is good because it can be in time or space. Yes. But when it comes to Malayalam, Anashwaram Anandam. Oh, yeah, yeah. Anashwaram Yeah, is in time, yeah. eternity in time, Right. whereas Anandam is eternity in Yeah, space. eternity He in says, what space. is your endlessness? I just touched his feet saying that, sir, idana Guru. It's a Idana very, Guru. very tricky Very way of tricky. catching her. So finally we agreed on Anashwaram. And I don't have to tell this audience that Ayyappa Panikar was I a think very Dr. tough. Jansi is there. Yeah, Who will Jansi man be is here. recalling Ayyappa Panikar Right, in right, right. chants. Ayyappa Panikar was our mentor, and he was a very tough No doubt. taskmaster, no doubt of it. And that also makes me wonder why you did not attempt to foreign writers, foreign poets. You have read several foreign poets. Why was that an Writers, intention? I have attempted Gaganji. I Yeah, got it because I like the poetry. uh, I got it in English. I Gaganji think it is was in Indian. very much our Gaganji. So, So I and somehow related to that poetry without a permission. I translated and published it in Malayalam Weekly right. because it was very fascinating. So now we can perform miracles, right? But Right. then, I'll tell you one before we have time. Yeah. I'll tell you my philosophy of translation. I have translated Tagore. I have translated Rumi. I have translated Gibran. I have translated Kabir. Kabir. I have translated Lao Tzu, Right, right, right. Tao. These are the writers whom I have generally translated. Then Omar Khayyam also I did. You know, I was wondering myself, what is it that pulls me or attracts me to this kind of works? And what are these kind of works? They are spiritual. There's an element of spirituality. Whereas my poetry is anything but spiritual. There is no spirituality. I do not say that my poems are spiritual. But Tagore, Kabir, Gibran, Rumi, all these poets, they talk about something different, something aspirational for me. I have not reached that,
but I understand their aspiration. That is my Right, aspirational right, poetry. right, I right. cannot write like Tagore. I cannot write like Rumi because I do not have that kind of metaphysical or mystical experience. To me, it is an intellectual exercise. Mysticism, for me, what they have understood intuitively is for me an intellectual construct. Intellectual construct is the real experience. So Right, it is my aspiration. I want right. to follow Gibran. I want to follow Tagore. For example, uh, Gibran's wonderful book, not only Prophet of course is more popular, but is more the great book, his masterpiece, I would say, is Jesus, the Son of Man. Yes, yes. This is I was so fascinated by this book. It's a big book, 300 pages or so, one of the biggest books, the longest book. These books are all small. And translation is such a drudgery, as you know. When a translation is over, you really breathe, you are sad, relief. But when I finished the last verse of Gibran in Jesus, the Son of Man, I was so sad. I was sad because from tomorrow morning I'm not going to spend time with Gibran and with Jesus. I was exactly in exalted company. It right. is that kind of ennoblement that makes you feel when you. It is that it is for that ecstasy that I Right. undertake this kind of translation. Maybe in European author doesn't excite me so much. Rilke I tried to translate, but I could not. Very, very kind of candid confession. And this is the concluding question, sir, because we are reaching at the end of time. Uh, Time has changed, poetry has changed, many things have changed. The ways of reading poetry has also has changed, and we have entered into the world of artificial intelligence. In the coming era, uh, well, one can't be certain that how does one appreciate the aesthetics of poetry? How does one get into poetry in an age of artificial intelligence and in an age of intensified, sophisticated mechanisms? So, anticipating all these things and having known the fact that all these things are around us, all right, you are writing a poem, the next moment that is produced with the help of an artificial intelligent machine into something else. Lot of transformations of language, linguistics, vernaculars, and the rest of things are taking place. In some sense, it's a very dangerous kind of a question regarding a dangerous kind of a situation regarding we are highly getting into a kind of a dystopic world. uh, what can poetry offer in a world of dystopia? How can poetry survive in a world of dystopia? And being as a poet, what is going to be your message to this audience that how poetry should outlive and outlive? It's a very loaded question, Krishnunni, and we have 3 minutes to answer it. Not really worried about artificial intelligence, to be frank, as a poet. As a poet, I'm not worried about artificial intelligence. And if poets can make use of it as a resource, good enough. But don't go for plagiarism. But what I'm worried about is not technologies. Technologies, the great merriment about artificial intelligence will fade out for something else now. These are all waves, you know. And what you know as artificial intelligence today will appear as child's play in another 4 years or 5 years. So much more versatile technologies will come. But whatever technologies come, it cannot replace human creativity. That is my greatest, what should I say, my belief, my faith. And I think that is the faith of all writers. And that faith is necessary for us to survive. If artificial intelligence is going to take over your literary creation, then we are okay. Anyway, but I don't think creativity can ever be uh, replaced by artificial intelligence. That is one thing. But what is worrying me is not the technological revolution or upstage of technology, but the lack of interest in anything humane, in anything that affects human lives, sentiments, the kind of corporate capitalism that is overtaking you Ah, yeah, and making us into commodities. And the whole life is pivoting around acquiring commodities, making more money, making this thing. Life has become uh, mechanical. If you go and eavesdrop into a college canteen, uh, you will find very few people talking about poetry. They will be talking about technology or not even politics. Politics is also not interested. They are into so many other pursuits. Where poetry is an outsider. Literature itself is an outsider. But then the function of literature and poetry is to reassert your humanity, your humanity. And I'm sure we might even enter a phase where nobody is interested in anybody else. And that will bring back to focus
the urgency of poetry. Have some poetry, have some humanity left in you. I'm sure the love of human beings for human beings will be the assertive call to get back to literature. So I'm not really worried. Of course, I'm worried because the challenges of poetry, challenges of literature are really true. We have to reassert our humanity and humaneness and compassion in an age where all these virtues don't have any patronage. Thank you very much, sir, for that very interesting, promising note that poetry will survive, literature will survive, we will have our aesthetics, despite the fact that any kind of commodification, and we need to fight. Literature is a mode that should fight against these kinds of fetishism and commodification. And with that, uh, let me say that we can conclude this session. Thank you very, very much. of the mind of a great poet. And he also gives us hope that we need to reassert humanity through poetry and literature. So that is the big takeaway from what he said. We now have the pleasure of inviting Anjum Sharma to be in conversation with Gagan Gill. I request you both to join us on the dais, please. Sharma is a distinguished journalist known for Sangat, a popular video interview series of Hindi literary figures. Kindly come to the stage, please. Anjum Sharma. Come, Anjumji, come to the dais, please. I, Srimati Gagan Gill is an eminent Hindi poet, writer, and translator. She has been conferred with the Sahitya Akademi Award for Main Jab Tak Aayi Bahar. This collection reflects her inner yearning for the spiritual and the mystical. The beauty of these poems lies in the subtle vibration of the inner world as it remains calm in the troubled outside. I request you to join us on the dais, please. So, tea break में कि नहीं बैठे? All right, it's been decided to take a break for 10 minutes because we are expecting more people to be present here. If you want, you can take a 5-minute tea break and come back in 5 minutes so that we start in 10 minutes.
In this session of Face to Face, we have a conversation with Gagan Gill. Conducting the conversation would be Anjum Sharma, who is a journalist known for Sangat, a popular video interview series of Hindi literary figures. I request you to join us on the dais, please. Gagan Gill is an eminent Hindi poet, writer, and translator. She has been conferred with the Sahitya Akademi Award for Main Jab Tak Aayi Bahar. This collection reflects an inner yearning for the spiritual. The beauty of these poems lies in the subtle vibration of the inner world as it remains calm on the outside in a troublous world. So it's over to Anju. Thank you, ma'am. Fine, fine. Uh, कायदे से तो इस सत्र में या इस तरह के सत्रों में उम्मीद रहती है कि एक भी कुर्सी खाली नहीं होगी, खास तौर पर तब जब साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स के साथ में संवाद के सत्र हो रहे हों। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे मुझे लगता है लोग आएंगे और देखेंगे। मैं जब तक आई बाहर, ये मेरे लिए दूसरा मौका है जब मैं गगन जी के साथ एक लंबा संवाद सत्र में मैं आमने सामने बैठा हूँ। इससे पहले तकरीबन 1.5 साल पहले हमारी एक लंबी बातचीत 2 घंटे की हुई थी और उसके बाद आज हम लोग बात कर रहे हैं। कवि मन कैसा है, क्या है, वो सब पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी मैं सीधा चाहता हूं कि हम लोग बातचीत शुरू करें। गगन जी, आपने एक बात इसमें लिखी कि ये संसार 2 वस्तुओं से बना हुआ है, देह की मुंडेर पर। आपने लिखा, कवियों के लाए अलाव से यह संसार बना है, और दूसरा, कवियों के जले पंखों से यह संसार बना है। तो 2 तरीके से इन्होंने संसार की निर्मिति की बात की है। और अगर कविताओं की तरफ अगर थोड़ा सा मैं जाऊं तो बहुत, जिसको कहते हैं कि उन कविताओं का स्वभाव अंतर्मुखी किस्म का अधिक है, और उस अंतर्मुखी किस्म के स्वभाव के भीतर मौन की मुखरता बहुत अधिक है। इस समय जब बहुत अधिक वाचाल समय है, बहुत अधिक शोर से भरा हुआ समय है, ऐसे में किसी के अंतर्मुखी स्वभाव के भीतर मौन का मुखर होना अपने आप में उसकी विशिष्टता है। तो यहीं से शुरू करूंगा कि क्यों आपको लगा कि ये संसार 2 ही वस्तुओं से बना हुआ है, कविता के लाए, कवियों के लाए अलाव से और कवियों के जले पंखों से। मेरे जो भी मेरे जो भी प्रिय कवि हैं, जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी है, उन्हें मैंने इन्हीं बिंबों में समझा है। या तो वो कोई आग लेकर आए जिससे मुझे रोशनी भी मिली, मत भी मिली, और या मैंने उनकी उस यात्रा को देखा कि जब हम जोखिम उठाते हैं जीवन का सत्य पाने के लिए, तो उसकी क्या कीमत देनी पड़ती है। तो जो कवि ये कीमत दे चुकते हैं या देते हुए दिखते हैं, वो भी आपको एक अलग तरह से आपका आत्मबल देते हैं। आत्मबल कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो मेरे में अपने आप से ही पैदा होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। वो आत्मबल तो मेरा है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होगा, भूमिका होगी। तो ये जब मैं कहती हूँ कि या उनके चले हुए पंखों से, तो मुझे लोरका का ध्यान आता है। वो स्पेनिश क्रांति में योद्धा भी थे, बाद में उनको शूट किया गया, लावारिस लाश किसी नाले में पड़ी हुई मिली। लोग ये भी कहते हैं कि वो उनकी लाश नहीं थी।
और लोरका की कविताएं देखिए तो बहुत ही सुंदर छंद वाली कविता है। छंद कैसे बनता है एक कवि के हृदय में, ये भी एक बड़ी मिस्ट्री वाली चीज है। और कविता जब हम मुक्त छंद में लिखते हैं या जब वो छंद में आनी शुरू होती है, इसका मतलब वो आदमी, वो कवि अपने से काफी बार बार बात कर रहा है, तभी वो छंद में धीरे धीरे वाक्य बदलता है। इसीलिए आपने ये लिखा कि कविता का आदर्श छंद ही हो सकता है। हालांकि ये बहस बहुत पुरानी है कि कविता का आदर्श छंद हो सकता है या छंद मुक्त या मुक्त छंद भी हो सकता है। और अगर छंद हो सकता है तो उस छंद से तात्पर्य आपका लय से है या वाकई में जो छंदबद्धता है उससे है? और अगर है, अगर उसी में हो सकता है, आपने वह छंद तोड़ने के प्रयास क्यों? मैं अंतिम, आपने वह छंद तोड़ने के प्रयास क्यों किए? मुझे लगता है मैं अपने समय का भी तो प्रोडक्ट हूँ। ये जीवन जितना मैला है और चैलेंजिंग है, इसमें छंद तो छूट ही जाता है, क्योंकि हमारा जीवन हमें अपने से बात करने की मोहलत ही नहीं देता। मोहलत हर दिन कम होती जाती, और छंद बनने में, छंद से मेरा अभिप्राय लय से ही है कि जो बात लय में बुनकर आती है वो कुछ अलग तरह से आपसे बात करती है। तो अगर हर कवि में इतना संयम हो कि वो अपनी पंक्ति को लय तक ढलने का इंतजार कर सके, तो इससे सुंदर कविता लिखने का या कविता पढ़ने का अनुभव कोई और नहीं हो सकता। और ये संयम कैसे आता है एक कवि के भीतर? अभी जब मैंने कहा कि आपकी कविताएं अपने स्वभाव में अंतर्मुखी किस्म और वह अंतर्मुखी होना अपने आप से बात करना नहीं है। अ, वाचाल समय है, सब जानते हैं। हर तरह की मूर्खता का समय है, सब जानते हैं। और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से इतना शोर शराबा है कि हम अपने भीतर की आवाज सुन सकने में धीरे धीरे अक्षम होते जा रहे हैं। ऐसे में कविताएं अगर मौन के गुंजलक में सामने आती हैं, उससे घिरी हुई लगती हैं, तो कवि अपने भीतर के मौन को कैसे सुन पाता है? क्या एक कवि के तौर पर जब बाहर का शोर है, तब अपनी विशिष्टता के प्रति कोई भी कवि कैसे सजग रहता है? कवि को अपनी विशिष्टता के प्रति सजग होना नहीं चाहिए। विशिष्टता भी एक तरह का बंधन है, माया है और ट्रैप है। अगर आप अपने को विशिष्ट समझेंगे तो जीवन आपके साथ उस तरह घटित नहीं होगा जैसा वो हो रहा है। कवि के लिए अपने को विशिष्ट होने से बचाना चाहिए, कवि होने से भी बचाना चाहिए। कवि का काम ये नहीं है कि उसको कविता की पंक्ति सूझी तो लिखने बैठ जाए। कवि का चैलेंज ये है कि उसको कविता की पंक्ति सूझ रही है, लेकिन वो विश्राम कर रहा है। वो उस पंक्ति को बनते हुए, मिटते हुए वॉच कर रहा है। कविता आसानी से नहीं लिखनी चाहिए। कविता तब लिखनी चाहिए जब आप निहत्थे हो जाए, जब आपको लगे कि अब ये लिखवा कर ही रहे। जो कवि एक के बाद एक कविता लिखते जाते हैं, तो आपको मतलब किसी की कविता पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि ये कविता आसानी से लिखी गई है या ये कहीं बहुत अंधेरे रास्ते में से गुजरते गुजरते अपनी जगह पर पहुंची। तो सच्चे कलाकार को
अपने को चैलेंज में रखना चाहिए। एक लेखक होने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए लिखना बहुत आसान हो गया। मेरे लिए लिखना हर दिन मुश्किल हो, ये तभी हो सकता है जब मैं लिखने से क्या-क्या चीज़ें अचीव की जा सकती, इसके प्रति सजग हूँ। और मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए, मुझे आसान चीज़ नहीं चाहिए। तो एक आदर्श कविता की प्रतिमान आपके लिए क्या है? कविता का प्रतिमान शब्दों में कहना तो मुश्किल है, लेकिन कविता बिल्कुल मतलब आप ये चाहते हैं कि कविता अपनी परंपरा में भी दिखे, कविता केवल आपकी लिखी हुई भी दिखे और कविता इन दोनों से मुक्त कोई बड़ी चीज की तरफ जाती हुई भी संघर्षरत दिखे। तो ये 2-3 काम अम, कविता को करने चाहिए। लेकिन ये 2-3 काम कोई भी कवि कविता से सजग रूप से नहीं करवा सकता। उसकी अगर टेम्परामेंट ऐसी होगी, तो मतलब स्वभाव में ही ये आ जाना चाहिए। अ, मैं अगर अपनी परंपरा की हूँ, तो मैं कोई एक मोमेंट में नहीं हूँ। मैं हर समय 24 घंटे अपनी परंपरा में। अगर मेरी कोई ध्वनि है, मेरा कोई आवाज़ है, वो भी 24 घंटे क्योंकि मैं अपने को साफ कर रही हूँ, तो मेरे में है। लेकिन मैं ढूँढ क्या रही हूँ? कोई भी कवि क्या ढूँढ रहा है? कवि को इस चीज़ से पूछना पड़ता है। ठीक है, इसी को ले रहा हूँ। आप क्या ढूंढती हैं? अगर हम इस बात को कर रहे हैं कि कवि क्या ढूंढता है, इससे जूझना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है आप जूझती रही होंगी और जूझती होंगी। तो क्या खोजती हैं जब आपको लगता होगा कि ये अब कविता है? मुझे लगता है मुझे अक्सर रास्ता रास्ता नहीं समझ में आता और फिर लगता है रास्ता परंपरा में से ही निकलेगा। इसी में मैं जब तक आई बाहर में एक कविता है, किसी ने बताया नहीं मैंने पूछा भी नहीं, रास्ता किधर से है। तो इसमें ये कॉन्शियस लेवल पर तो नहीं है, उसमें तरह-तरह के बिंब आते हैं। तो उसमें ये भी है कि मैंने बल्कि वो मैं कविता ही पढ़ देती हूँ, वो शायद उसका सबसे किसी ने बताया नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, रास्ता किधर से है। इतना भी नहीं कि सीढ़ियाँ चढ़नी है या उतरनी, पीछे मुड़कर देखना है कि नहीं, पुल कोई आ जाए बीच रास्ते, पार करना है कि नहीं, मैंने पूछा नहीं, करना है क्या? अपने पैरों में उलझी अनंत की इस रेखा का नक्शा मैंने कोई ढूंढा नहीं, किसी ने बताया भी नहीं। न चांद को देखा, न तारे को, सूरज को, न मौसम और साइत को, न आईने में देखा अपना बौना, गठरी तक बांधी नहीं, अंधेरे चलने से पहले ढूंढा नहीं अपना लाठी और लोटा तक, चुल्लू भर हाथ लिए निकल आई रास्ते पर, किसी ने बताया नहीं ठग मिलेंगे तुम्हें कुछ दूर जाने पर, कि भूख लगेगी अकारण बहुत, बल्कि भूख ही होगी तुम्हारा ठग। जहर से बचोगी तुम मारी जाओगी अपनी प्यास से,
एक जगह दिखेगी अपनी टूटी चप्पल, फिर नंगा पैर, चुभा उसमें कंकर, उसके बाद भी नहीं। बार बार तुम रुकोगी, पीड़ा नहीं, मायावी किसी पुकार से। किसी ने बताया नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। मुड़कर अगर देख लूंगी, कितने दिनों, कितनी घड़ियों में हो जाऊंगी पत्थर। सीने में दबाए सवाल, कितनी दूर चलती जाऊंगी तो होगा कोई पुल। मुझे लगता है कि ये कविता एक भारतीय मन ही लिख सकता है। इस कविता को जहाँ मेरी अंग्रेजी की संभावित अनुवादक बैठी है, मुझे नहीं लगता ये अंग्रेजी में अनुवाद हो सकती, क्योंकि इसमें भाषा के नीचे शब्द तो है, लेकिन शब्द की छाया इतनी प्रबल है इसके सब टेक्स्ट में कि शब्द तो आप शायद ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन जो उसकी छाया है वो किसी दूसरी भारतीय भाषा में तो संप्रेषित हो जाएगी। आप जो भाषा की बात करेंगे रची, विचार, अनुभव, अनुभूति और भाषा, इन सब के भीतर एक अंतराल होता है। यानी नदी के इस पार विचार है और मुझे नदी के उस पार तक लेके जाना है। बीच में अनुभूति, अनुभव और भाषा की यात्रा आपको करनी है। अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है, लेकिन एक कवि जब विचार, अनुभव, अनुभूति और भाषा के अंतराल को जीता है, तो भाषा सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती इसमें थोड़ा विडंबना है। कवि को बात जो कहनी है वो भाषातीत कहना चाहता है, लेकिन उस भाषातीत को कहने के लिए उसके पास दो ही अ, औजार हैं। एक तो भाषा है और एक अनकहा जो उसने छोड़ दिया। क्योंकि जो हम कविता लिखते हैं वो सारी की सारी भाषा से नहीं लिखी जाती, कुछ उसमें हम इम्प्लिसिट छोड़ देते कि पाठक में इतनी कल्पना है, इतनी इंटेलिजेंस है कि जो हमने अनकहा छोड़ दिया है, गिवन मान लिया है, वो इस पंक्ति को पढ़ते हुए जो नहीं लिखा है उसको भी पढ़ रहा है। उसका जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो इन दोनों चीजों से बनता है, पंक्ति पढ़ने से और जो उसके नीचे एक लेयर चल रही है वो, और कभी वो लेयर नहीं चल रही है, मौन चल रहा है, खामोशी चल रही। कभी कभी कोई कविता ऐसी होती है कि उसको पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि ये कविता जिस अनुभव की बात कर रही है ये जैसी भाषा में आना ही नहीं चाहती। हर अनुभव भाषा में नहीं आना चाहता और हमें इस चीज के प्रति उतना ही सेंसिटिव, संवेदनशील रहना चाहिए जितना अ, वो अनुभव जो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं। है? ठीक है। थोड़ा कविताओं की तरफ आ रहा हूँ। जब मैं आई बाहर में ही, इसमें एक कविता है अंडे से निकलूं बाहर, या भैया इसके बारे में मत पूछना, पहले भी तुमने मुझे बहुत फंसाया था। मैंने एक तो और कविता है मैं वहां थी मगर, है ना? खाली रेफरेंस दे रहा हूँ इन कविताओं का सबका। सब द्वंद्व, लोग मान चुके हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट अरे लड़के हो अपनी पीढ़ी के, तो मुझे निरुत्तर नहीं करना है, ये हम हमारी बातचीत पहले हो चुकी। नहीं नहीं नहीं, वो उद्देश्य भी नहीं है। नाम ऐसा एक तो रखा है, ये होना ही नहीं चाहिए। वो लग रहा है कि मीडिया में हम दोनों आमने सामने बैठे हैं और फेस टू फेस। खैर, द्वंद्व और तनाव, इसकी पृष्ठभूमि पर आपकी कविताओं का वितान निर्मित है। या पूरा का पूरा जो विराट आप रचती हैं उसके भीतर द्वंद्व और तनाव की निर्मिति है। क्या द्वंद्व और तनाव आपके
की मानसिक निर्मित होती है या इस निर्मित के पीछे सामाजिक और ऐतिहासिक या राजनीतिक आधार होता है? अब मैं इन दो कविताओं के कॉन्टेक्स्ट में या और भी कविताओं के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पर पूछ रहा हूं, जहां कुछ करने की इच्छा भी है और पैर भी पीछे खींच लेने की भी इच्छा व्याप्त है उसके, तो एक द्वंद्व भी होता है और एक तनाव भी बनता है। मुझे लगता है इन दोनों चीजों को हम अलग कैसे कर सकते हैं। हमारे भीतर जो भी द्वंद्व आता है वो आता तो बाहर से ही है, और बाहर से भी ज्यादा वो उन मूल्यों के प्रति सजग होने से आता है जिनके साथ हम बड़े होते। द्वंद्व का मतलब ये है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड में एक कोई मूल्य है जो एटर्नल मूल्य है। अगर हमारे समाज में या हमारे जीवन में वो खंडित होता हमें नजर आता है तो द्वंद्व से पैदा होता। और इस किताब में जैसे मैं बहुत जूझी हूँ आस्था के प्रश्न से, और नागरिक रहते हुए तो लगता है कि भाई आजकल के समय में आस्थावान होना बहुत आसान चीज है, क्योंकि हर कोई अपनी आस्था को प्रोक्लेम करता है। लेकिन जब आप इसमें गहरे सोचते हैं तो आप पाते हैं कि आस्था की दुनिया और विचार की दुनिया और कविता की दुनिया, ये अलग अलग दुनियाएं हैं। और इनमें कुछ चीजें बहुत दूषित होती जा रही हैं और कुछ चीजें प्योर लाइट में है। और एक कवि के नाते आपको ये दूषित समय से प्योर लाइट के बीच का फासला तय करना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप आस्थावान हो और आप अपने समाज के विरोधाभासों को क्वेश्चन करें। वो आप नहीं कर रहे, वो आपका जो गिवन संस्कार है वही आपको कह रहा है कि आप इसको क्वेश्चन करें। ठीक। कविताओं के दूसरे रंग पर आ रहा हूं जिसमें प्रेम है, और उस प्रेम में विरह का जो रंग है वो उजला है। प्रेम में गोपन भाव है भी और नहीं भी है, रहस्यानुभूति है व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन वो अंतरिक्ष तक जाने की बात भी करता है, और वो उस अंतरिक्ष के विस्तार में भटकता भी है प्रेम। तो जिसको हम छायावाद में जो हम प्रेम की अनुभूति देखा करते थे, या जो हमने अज्ञेय और शमशेर के यहाँ देखी, तरह के प्रेम की रहस्यानुभूति इन कविताओं में दिखलाई पड़ती है। अब क्या प्रेम की जीवंतता गगन जी उसके अधूरेपन में है? ये कविताओं को पढ़कर ही मुझे लगता है ये प्रश्न निकला भी है। इसमें विरह है, मिलन की इच्छा भी है, क्या प्रेम की जीवंतता उसके अधूरेपन में है? काश कि मुझे प्रेम के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी होती। मुझे सचमुच प्रेम के बारे में, मैंने प्रेम किया तो बहुत है, बहुत डूब कर किया है, न्योछावर होकर किया, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मुझे अक्लमंदी वाली बात क्या निकलेगी प्रेम से, ये अभी तक नहीं पकड़ सकी। हालांकि ये जवाब नहीं है लेकिन लेकिन ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जवाब नहीं, कुछ तो आप भी कहिए। नहीं 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 चलिए, इसके बावजूद बार बार
कविताओं को पढ़ते हुए आप ये पता है कि जो चला गया है वो वापस नहीं आएगा, फिर भी एक प्रतीक्षा है मिलने की, और उसमें आध्यात्मिकता आपका सहारा बनती है और आप आध्यात्मिकता से मानवीय चेतना को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। क्या प्रतीक्षा की त्रासदी या वेदना के आवेग से लड़ने का संयम आपको लगता है आध्यात्मिकता से अधिक आता है? देखो, जो आदमी प्रेम करता है वो प्रेम ही करता है, उसको आध्यात्मिकता से कुछ लेना देना नहीं है। आप तो कह रही हैं आपको पता नहीं है कुछ भी। नहीं, इतना तो मुझे, क्योंकि पता मैं है। दोनों संसारों में विचरण करने से हाँ, इतना तो मुझे समझ में आया कि प्रेम में कुछ याद नहीं रहता, और आध्यात्मिकता में फिर वो आपके सारे सुखद दुखद अनुभवों को एक तरह की विजडम की ओर ले जाता है। हम जाने अनजाने साहित्य पढ़ते हुए यही यात्रा करते रहे। हम अनुभव से ज्यादा विजडम की तरफ जानना चाहते हैं। उसको मैं ज्ञान नहीं कहूँ, विजडम मुझे नहीं पता उसका विजडम का क्या सही शब्द होगा। दिल कुछ समझ लेता है, दिल कुछ ठहरने लगता है, दिल का तूफान कुछ ठहर जाता है, कम हो जाता है। ये आध्यात्मिकता करती है। तो आध्यात्मिकता आपको बहुत अ, अलग तरह से हील करती है। प्रेम हील नहीं करता, प्रेम बस छीलता ही रहता है। आप चाहे विरह में हो चाहे मिलन में हो, वो आपकी आत्मा को वो छीलता रहता यही जो आप बोल रही हैं कि छीलना या हील करना, आपकी कविताओं की जो भाषा या कहूँ बहुत अंडरटोन में आती है, संयम के साथ आती है, क्या यही संयम भाषा का या अ, विरह का या वेदना का जो भी है, क्या वो संयम गहरी साधना से अर्जित है, जो कि आपने एक आकांक्षा समय है कि बाद 20 वर्षों के अंतराल के बाद आपने कविता संग्रह लिखा मैं जब आई बाहर, और जब बाहर आई तब तक दुनिया बहुत बदल चुकी थी, आंतरिक तौर पर भी और बाह्य तौर पर भी। क्या वो गहरी साधना से अर्जित है? है। मुझे नहीं लगता मैंने कोई साधना की है, या कुछ अर्जित करने की इच्छा की। मैंने बस एक जीवन को, जैसा भी वो मुझे मिला था, उसको पूरे ग्रेटिट्यूड से जीने की कोशिश की। और संयम भी मुझे नहीं पता मेरे में भाषा को लेकर कितना है या नहीं है, लेकिन मैं दोहराव के प्रति बहुत सजग हूँ। तो मुझे जो समय लगता है किताब से दूसरी किताब में जाने के लिए, वो ये कि जो मैंने एक बार जिस अनुभव को या अनुभव के सर्कल को एक्सप्लोर कर लिया, मन में भी और भाषा में, उसको मैं दोबारा नहीं छेड़ना। तो मतलब अंतर महसूस किया ही होगा गगन जी, क्योंकि जब आप लिख रही हैं मैं जब तक आई बाहर, एकांत से मैं बदल चुका था रंग दुनिया का, अर्थ भाषा का, मंत्र और जप का, ध्यान और प्रार्थना का, फिर आप अंतर ये बात करती है कि मैं जब तक आई बाहर एकांत से अपने बदल चुका था अर्थ भाषा का, मंत्र किसी काम का ना था, आदि आदि। तो उन 20 वर्षों के अंतराल में कुछ तो हुआ ही होगा। हुआ। मैं 100% अपने शब्द में कहना नहीं चाहती, लेकिन आ रहा है कि मैं अपने अम,
साधक पक्ष में गई बिना ये जाने कि ये साधना या साधक का पक्ष है। मैंने कोई मंत्र नहीं जपे जपे भी, लेकिन मेरी साधना मौन की साधना थी। और मेरी साधना एक डूबे हुए व्यक्ति की साधना थी, जो डूबा हुआ तो है लेकिन अभी मरा नहीं है। वो अपने ऊपर से जल को जाते हुए देखता है, जीवन को गुजरते हुए देखता है, और वो ऊपर भी आना चाहता है। वो हमेशा डूबा नहीं रहना चाहता, लेकिन वो उसके साथ जो कुछ भी जीवन ने किया है, वो उसकी हर चीज को समझना चाहता है। क्योंकि जीवन शायद हम इसीलिए लेते हैं कि एक जीवन में जो चीजें हम नहीं समझ पाते, वो उसके अगले जीवन में शायद धीरे धीरे उनका दरवाजा खुलता। ठीक है, तो क्या यही चीज आप अपने पाठकों से भी उम्मीद करती हैं कि आपकी कविताओं की व्याख्या वो एक निश्चित दिशा में करे? क्योंकि जैसा आप परत दर परत जीवन को छीलती या उसके साथ जीती चली जा रही है, संभव नहीं है कि पाठक भी उसी तरीके से जीता चला जा रहा हो। क्या किसी खास तरह के अर्थ के या व्याख्यायित करने की अपेक्षा पाठकों से रहती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि टेक्स्ट एक ही रहता है, लेकिन उसको पढ़ने वाला मैं बदलता रहता है। मैं अपने पाठकीय अनुभव की बात कर रही हूँ। जो कविता मैंने 30 साल की उम्र में पढ़ी होगी, 40 की उम्र में उसका एक दूसरा अर्थ मुझे समझ में आएगा, और दस टेक्स्ट वही रहेगा। 50, क्योंकि जीवन जो मेरे साथ कर रहा है, जीवन मुझे टेक्स्ट समझा रहा है बिना टेक्स्ट मुझे दिखाए हुए। मैं जीवन मुझे कोई एक पर्टिकुलर कविता नहीं समझा रहा, जीवन मुझे सारा साहित्य समझा। इसीलिए लेखक होना सबसे मुश्किल नियति है, क्योंकि आपको 24 घंटे सजग रहना है कि आपको क्या समझाया जा रहा है। कभी आपको जब समझाया जा रहा होता है आप सो जाते, डोंट गेट द लेसन। फिर दूसरी बार कुछ होता है तो आपको, तो ये इसी तरह से चलता है। साधना तो मुक्ति की ओर लेके जाती है गगन जी। अगर आप बहुत अधिक भैया आध्यात्मिक है मेरे को या साधना नहीं, की सुनिए तरफ ना, मत लेकर जाओ। लेकिन मैं एक अगर सीधा साधा अदना सा कवि हूँ, और कविता की पंक्तियों से संघर्ष करती रहती हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, वो बहुत साफ तस्वीर दिखाए जाने के प्रयास हो रही है जीवन को, कि आपने कहा उस 20 वर्ष के अंतराल में मैं अधिक उस ओर गई आदि आदि, जो कि आपकी बात के संग्रहों में दिखलाई भी पड़ता है। लेकिन कविता के भीतर जो आंतरिक उलझन आती है, उसमें जो प्रकृति की पृष्ठभूमि आती है, प्रकृति है पूरी कविताओं में है, क्या प्रकृति की पृष्ठभूमि आना उस आंतरिक उलझन को दर्शाए जाने के लिए आता है या वो सहज रूप से आती है? कविता में कुछ भी आरोपित तो नहीं कर सकते, जो कुछ भी आता है सहज रूप से ही आता है। जैसे हम अपनी बात एक तरह से नहीं कह पा रहे, तो दूसरे रास्ते से आकर कहते। अ, मानवीय अनुभव से नहीं कह पा रही हूँ तो प्रकृति का कुछ रेफरेंस देकर बात कर रही हूँ। लेकिन जिस भी रास्ते से घूम कर आऊं, मुझे लगता है कि कवि तो कवि ही रहता है। वो कभी रिजॉल्व नहीं होता। साधक जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, कभी रिजॉल्व नहीं होता। कभी एक चक्कर के बाद वहां अगर थोड़ा सा कुछ छूट भी गया तो दूसरी बड़ी जगह पर अपना पैर फंसा के बैठ जाता, फिर से वो फिर से उसको समझना चाहता। चलिए कुछ छोटे छोटे सवाल है। वर्तमान समय में 3 में से 2.5 आदमी कवि, हर दूसरा आदमी कवि है।
बावजूद इसके समाज कविता विहीन समाज की ओर बढ़ रहा है। ये समाज की असफलता है या कविता की असफलता है? ये किसी की भी असफलता नहीं है। मुझे लगता है कि हमारा ये जो समय है इसको शायद संक्रमण काल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी आपाधापी आ गई है, तो हमारी एक्सप्रेशन की भाषाएं भी बदलेंगी। और मुझे लगता है कि हम देर सवेर, ऐसा नहीं है कि हम कविता करने से बच जाएंगे या नहीं करेंगे, हमारी कविताओं का एक्सप्रेशन बदल जाएगा। हम शायद ज़ेन कविता की तरह हो जाएंगे, हाइकू कविता की तरह हो जाएंगे, सूक्त वाक्यों की तरह हो जाएंगे, और उसी में सब छन जाएंगे। जो ढाई कवि की आप बात कर रहे हैं, इसी प्रोसेस में सब छन जाएंगे। जो सत्व को पकड़ लेगा, उस एक्सपीरियंस को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कह देगा, वो बच जाएगा। और जो दूसरा कवि है, वो अपने लिखे में मुक्त होता रहेगा, और वो मुक्त होना भी अच्छी बात है। इधर बहुत अधिक स्त्रियां आगे आई हैं, बहुत स्त्री लेखक आगे आई हैं, और स्त्री विमर्श के हवाले से भी बहुत सारी कविताएं और कहानियां लिखी जा रही हैं। जबकि आपने देह की मुंडेर पेज 93 पर लिखा कि 90 के दशक में स्त्री विमर्श का खतरनाक खेल हुआ और इसने सबसे ज्यादा स्त्रियों को नुकसान पहुंचाया। कुछ को आप सिलेबस में पढ़ते हैं, कुछ पर शोध करते हैं, पर क्या वाकई में वो महिला लेखन है? क्या है? मैं मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि महिला लेखन क्या नहीं है। क्या नहीं है महिला लेखन? जो जो भी चीज अपने आइडेंटिटी के किसी पक्ष को सजग रूप से, घोषित रूप से कहने की बात करे, मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई ताल में किरक जैसी कोई चीज आ जा। आर्ट में मिलावट नहीं होनी चाहिए। आर्ट में स्त्री होने का छौंक तो लग सकता है, पर विमर्श का छौंक नहीं लगना चाहिए। विमर्श आउटसाइड लिटरेचर की बात है। मुझे नहीं समझ में आता विमर्श। ऐसा नहीं कि स्त्रियों की समस्याएं असली समस्याएं नहीं। मेरी अपनी कविता अभी कल कोई एक मैडम मिली थी, उन्होंने अपना स्टेटस पर लगा रखी थी, ना मैं हंसी ना मैं रोई, बीच चौराहे जा खड़ी, न मैंने काता, ना कुछ ऐसे, एक ऐसा धागा मैंने काता, इसने न बांधा न उड़ाया। ये इसकी अनुभव से निकली हुई कविता है, लेकिन ये मैंने किसी विमर्श के लिए नहीं लिखी। मैं समझती हूँ कि ये छोटा सा फर्क है जो मेरा माइंड करता है, हो सकता है सब लोग ना करते हो। मुझे लगता है एक लेखकीय स्वभाव होता है, एक पाठकीय स्वभाव होता है। अगर उसके साथ विमर्श जो नागरिक चेतना का हिस्सा है, अगर वो आ रहा है, तो उसमें कोई खराबी तो होनी नहीं चाहिए, उसमें कोई खामी बिल्कुल तो है नहीं। नहीं। और जाहिर सी बात है, नागरिक चेतना आनी ही चाहिए। हर कवि और हर पाठक नागरिक है ही। और अगर विमर्श हिस्सा है, तो उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, विमर्श से समस्या नहीं है। कलात्मक कहन के प्रति विमर्श तो हम करते ही करते हैं। अगर विमर्श ही नहीं करना तो फिर लिखने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। विमर्श तो हम अनजाने में भी करते रहते।
लेकिन मेरा जो आग्रह है वो कविता के सौंदर्य शास्त्र के प्रति है। कि कुछ चीजें कविता में गिवन की रहनी चाहिए, उनको मुखर रूप से कहने की जरूरत नहीं है। विमर्शकार उसका जो अनकहा पक्ष है वो निकाल कर सामने लेकर आते ही हैं। जब हम इसके प्रति ज्यादा आग्रही हो जाते हैं कि विमर्श दिखना चाहिए, असली विमर्श कहता है मैं दिखूंगा नहीं। हमारा समाज विमर्शों से ही उन्नति कर रहा है, चाहे वो स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो, आजकल अम्बेडकर का इतना चल रहा है। विमर्श ही तो हमें सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, अपनी बात को सफाई से समझने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट के तौर पर, एक लेखक के तौर पर वाक्य में क्या छूटना चाहिए ये तो मालूम होना चाहिए। क्या नहीं कहना ये आपको पता जी होना चाहिए, जी मतलब जी कुछ अनकहा छूटना जरूरी हाँ है आपके हाँ हिसाब से। जी जी। ठीक है, एक दो प्रश्न और दे रहा हूँ, यात्राओं की तरफ आ रहा हूँ। आपने इधर खूब यात्राएं की पिछले कुछ समय में, आप लगातार यात्राएं कर रही हैं, बाहर की भी, देश भर में भी और पहले भी। अब आप सबने पढ़ाई, जो भी कैलाश मानसरोवर के बारे में पढ़ना चाहते हैं उसने अवाक ना पढ़ा हो ये संभव है नहीं, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। क्या यात्राएं हमें उदात्त संपूर्ण मनुष्य बनाती हैं? और अगर यात्राएं बनाती हैं तो आप यात्राओं में क्या देखती हैं? सिर्फ यात्राएं तो हमें उदार नहीं बना, यात्राएं भी बनाती हैं, अब ठीक है। मैं समझती हूँ यात्राएं और हमारी रीडिंग्स, जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। एक यात्रा है जो आप बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ तैयारी किए घूम आते, और एक बीच से दूसरी बीच का फर्क नहीं कर सकते। और अगर बहुत सारे समुद्र देख लिए तो आपको मेरी उम्र तक आते आते याद भी नहीं रहेगा कि मेरे जो अभी इमेज दिमाग में चल रहा है ये मैंने देखा कहाँ था। असली यात्रा तभी संपूर्ण होती है जब वो अपनी सभ्यता की छाया में थी। अदरवाइज मतलब यात्रा कोई भूगोल की यात्रा थोड़ी है। यात्रा कोई भी यात्रा कर लीजिए, कहीं एवरेस्ट की कर लीजिए, एवरेस्ट पर भी आपको उसके पहले वाले यात्रियों की सांसें दिखेंगी, पैरों के निशान महसूस होंगे। यात्रा का मतलब यही है कि एक अनुभव जो कोई दूसरा करके गया है, मैं उसके साथ अपने को जोड़ूं। उसने जो देखा था, जहां तक देखा था, और उसने हमें बताया था कि यहाँ तक देखा, क्या मैं उसके थोड़ा सा और आगे कुछ देख यात्राएं जो हमें एनरिच करती, वो इसलिए कि उसमें हमारे पुराने यात्री भी जुड़े रहते हैं, उनके अनुभव जुड़े रहते हैं, ये सभ्यता वो जुड़ी रहती है। हमारा माइंड जो है वो जितना बाहर देखता है उसका अर्थ तो माइंड ही बनाता रहता है। अ, पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तो उसके अंत में आपने दो तीन वाक्य बोले थे कि मुझे हिंदी की दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, मैं अपने भीतर खुश हूँ, मैं वहां से बाहर नहीं आना चाहती, मैं जहां हूँ खुश हूँ। उसके बाद आप बाहर आई और या उस इंटरव्यू ने ही मेरे को बाहर खड़ा कर दिया। उसके बाद आप बाहर भी आई और हिंदी की दुनिया ने बहुत कुछ दिया आपको। का क्रेडिट तो मैं समझती हूँ अंजुम शर्मा को ही नहीं, अरे क्या जाता है। बात कर रहे हैं। आप बहुत दिनों बाद, हाँ, इतना लंबा बैठी थी, किसी इंटरव्यू में बोली थी, एक वो कारण रहा, लोगों ने आपको सुना भी और बहुत अच्छे से आपने अपनी बातें नहीं, रखी। मुझे तो बहुत खुशी हुई। अच्छा, मेरे जैसे कोने में बैठे लोग आदमी को लोग इतना सुनना चाहते हैं, तो मेरे को तो बहुत बोलना चाहिए। अंजुम है कहाँ पर बोल बातें नहीं करने सारा वाला। उसका पूरा मतलब खींच रही है वो भी मुझे यहाँ बैठ के, जितना इंटरव्यू में हुआ था।
लेकिन हाँ, जोक सपाट, जैसा आपने कहा था उसके बाद चीजें बहुत बदली। इस 1.5 साल में आप लगातार बाहर गईं, आपने कहा उस तरीके से संतोष नहीं था, हिंदी की दुनिया की ओर से आपको जो मिलना चाहिए था वो सब नहीं मिला, घर सब कुछ मिला, बाद में सम्मान भी मिला, अब देखो संतुष्ट हैं। देखो सुनो, जो मैंने चाहने की बात कही थी, उसका ये सांसारिक आशय नहीं था। ये जो भी इंटरव्यू देखेगा उसको पता है। और ना मेरा आज दिन तक इन तथाकथित उपलब्धियों से हम्म, कुछ घटता बढ़ता है। हाँ, ये बात मैं पूरी विनम्रता से जी, कह रही। लेकिन किसी के भाग्य में अगर कोई सम्मान या पुरस्कार आ जाए, हम्म, तो वो मोमेंट उसको आश्वस्त करने से ज्यादा नर्वस कर देता। मतलब साहित्य अकेडमी सम्मान का जब मुझे पता चला, तो खुशी तो मुझे हुई, लेकिन खुशी 2 घंटे में उड़ गई और मैं ढूंढती रही कि कहाँ गई खुशी। क्योंकि उसके बाद मुझे इतना फिक्र हुआ और मैं अपने घर में ऐसे चक्कर लगा रही थी कि अभी तक तो मैं बड़े आराम से बैठी थी, याद भी नहीं रखती थी कि मैं राइटर हूँ या नहीं हूँ। हम्म, जीवन जैसा आ रहा है वैसे ही जीती जा रही हूँ। हम्म, और अब ये सम्मान मिला है, इसका मतलब शायद मेरे पास कोई जरूरी कहने की बात निकल सकती है। हम्म, तो मुझे इस सम्मान के लायक बनने के लिए काम करना पड़े। ये सम्मान इसलिए नहीं कि मैंने कुछ कर लिया। ये सम्मान मेरे जैसे आलसी सोते रहने वाले आदमी को जगाने के लिए दिया गया है कि आप उठकर बैठ जाइए, और 65 साल के आप हो चुके, काफी समय आपने वेस्ट कर लिया। अब आपके जो कुछ साल बचे हैं सबको कुछ। मिल जाना चाहिए इस हिसाब से, पूरे हिंदी समाज को। अरे सरस्वती देवी सबको देखती है। हाँ, आइए। अ, इसके बाद अब क्या नया रच रही हैं और क्या आ रहे हैं? मैं ऐसी बेवकूफ नहीं हूँ कि ऐसी बातों के जवाब दूं। जब जब एक बार मैंने गलती से जवाब दे दिया था हाँ, और वो किताब ही रुक गई, तो 7 चैप्टर लिखे हुए वो 8वां चैप्टर आने को तैयार नहीं है। तो हाँ, मैं यही सोचती हूँ कि वो मेरा कहा हुआ तो निरस्त हो गया कि वो किताब आ और लिखी गई, तो बात उत्तम किताब होने वाली है। गद्य या कविता? गद्य। गद्य। गद्य को उतना, आपको लगता है गद्य को उतना नहीं पढ़ा गया या उस तरीके से नहीं सराहा गया जितना कविताओं की बात आपकी होती है? अब आग को छोड़ दे तो। मेरे मेरे गद्य की बात क्यों करते हो? मुझे लगता है अगर कुछ ढंग का लिखा होगा तो सब पढ़ा जाएगा, हम्म, चाहे वो लिटरेरी ऐसे हो, हम्म, साधारण ऐसे हो, हम्म, अम, या फिर लिखा तो अच्छा हो, विधा चाहे कोई भी हो, विषय चाहे कोई, अगर वो लिखने में ही कमी है तो आप वो कोई भी दूर की चीज उठाकर ले आइए, नहीं पढ़ेगा, छोटा बच्चा ही नहीं पढ़ेगा तो अक्लमंद पाठक कहाँ से पढ़ेगा? ठीक बात। तो आग्रह तो क्वालिटी ऑफ राइटिंग पर ही होना चाहिए। और बड़े लेखक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे समाज में ये है कि वो हमारे पाठकों को शिक्षित करते रहते हैं कि ये देखो, ये है बुरा लेखन, ऐसा मत लिखना, ऐसा मत पढ़ना फिर से। ठीक। मैं चाहता हूँ ये सेशन आप कविता के साथ इसका अंत करें और एक कविता पढ़ें। उसके साथ हम इस सेशन को अंत करेंगे क्योंकि मुझे इशारा आ चुका है। अरे नहीं, कविता नहीं अरे पढ़ती, कोई एक कविता तो पढ़ मैंने दीजिए, पहले पढ़ एक दी पढ़ थी। जो सबसे अच्छी थी वो तो मैंने पढ़ दी, अब तो
इस तरह आप खोलते हैं लंगर, इस तरह आप खोलते हैं लंगर, हवा में एकटक ताकते हुए, लहर को धकेलते हुए भीतर। पीड़ा ने डुबो रखा था आपको गर्दन से पकड़कर। एक सांस और, बस एक सांस और, एक झोंका और, थोड़ी सी हवा बस। आप खोलते हैं लंगर, जैसे काटते हो कोई टांका किसी घाव का। अब वहां सूखी गड़न है केवल, स्मृति किसी चोट की। अब सब गड़बड़ है, स्मृति भी, चोटों का हिसाब। कहीं जाना न था आपको, कहीं आना न था। आप यहीं रुकना चाहते थे सदा के लिए, गाड़ना चाहते थे अपना खूंटा। जैसे कोई चट्टान हो आप, या कोई पत्थर। इतने भारी, इतने स्थिर होना चाहते थे आप कि कोई हिला ना सके, कर न सके विस्थापित। कितनी मौतें लिए अपने भीतर, घूमते रहे बेकार आप, भारी मश्क लेकर। आप खोलते हैं अपने लंगर, और कोई नहीं रोकता आपकी राह, कोई नहीं पुकारता किनारे से, कोई यह तक नहीं देखता कि आप उठ गए हैं सभा से। खाली होने के पहले ही भर गई है आपकी जगह। पानी पर लिखी थी आपने इबारतें, सन्नाटे में सुनी थी अपनी ही प्रार्थनाएं। आपको पता भी नहीं चला, हवा ले गई धीरे धीरे चुरा कर आपके अंग, कि अब आप ही हैं धूल अपनी आंखों की, छाया की तरह गुजरते हैं आप इस पृथ्वी पर से, इस दिन पर से, इस क्षण पर से। काश कोई ग्रहण ही हुए होते आप, बने होते हवा और रश्मि के, कहीं रह जाता आपका निशान। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप इतने तन्मयता से इस पूरे सेशन को सुना। ये सत्र आपके आने वाली किताब जो गद्य है उस पर नजर बट्टू में काम करे, और आप जल्द उसे पूरा करें ताकि हम कुछ नया आपका लिखा पढ़ सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। धन्यवाद अंजुम जी फॉर दैट वंडरफुल इंटरव्यू, और गगन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक कवि की जगह दूसरा कवि नहीं ले पाता है। उसके कहे हुए शब्द हमेशा गूंजते रहते हैं पढ़ने और सुनने वाले के मन में। We now continue this session with another interaction with Dr. Dilip Jhaveri, who will be talking to Kamal Vora ji. Kamal Vora ji is an eminent Gujarati poet, translator, and editor. He has published 4 collections of poems, including Arav and Anek Ek, besides a work of translation, Anuja. His literary works have received prestigious awards, including the Sahitya Akademi Award for 2016 for his poetry, Anek Ek. Dr. Dilip Jhaveri, the eminent poet, writer, and critic, holds an MBBS degree, and therefore he is with medicine and with words.
He has 14 collections to his credit, 7 in Gujarati and 7 in English and other languages. His poetry has been translated into various languages. He is the recipient of several awards and honors. He was conferred with the Sahitya Akademi Award for his collection of 16 prose poems, Bhagwani Bato. This collective, complex collage is about God and the existential dilemma, but in a light conversational tone. These poems create a vibrant palimpsest of politics, science, and history. So this hopes to be a very interesting interview. I hand the mic over to Sri Kamal Vorati. Yeah, am I audible? As a poetry lover, as a fellow poet and a friend and a Gujarati speaking person, I am privileged and proud to be sitting next to eminent Gujarati poet Dilip Javeri, who has received 2024 Sahitya Akademi Award for his collection Bhagwani Vato. So since it's not Bhagwan who has brought us face to face, but Bhagwani Vato has brought us face to face. So I request Dilip Javeri to start with a small portion of that poem so that we all get a feel of his Gujarati and his voice also. Please. કીડી હાથી માથે મેલે દીપડાના ઊભા થવા બચ્ચાને વાઘ દાંતમાં ઝડપે બચવા જતા પારાને તેજ ટાણે મગર ચાવે કરોળિયો ફૂદાને કેદ કરે દીવાની વાટ તેલને ચૂસે ઘાસના મૂળ માટીના ઠેઠમાં ઘૂસે પાણી મીઠાના કણના લુગડા કાઢી ઉગળે આંખમાં આંસુ આવે ત્યારે ભગવાનના જ નામનો જપ હશે ને આપણું દીધું પાછું આપણને હેમકે મળે ભગવાનનું દીધેલું ગણીને ભગવાન પાછું આપે પ્રસાદ We both are science students, so we have written down everything so that we stick to the time frame and whatever we want to converse, we have to do it full justice. Bhagwanni Vato are not the poems written by a devotee for his Bhagwan. Actually, on a close look, one learns that this poet is an atheist. Interestingly, you neither ridicule the believers nor celebrate non-believers. So please share with us how you conceive these poems and explain in brief their complexity, as I find these poems quite complex underneath the layer of simple spoken Gujarati language. everyone has the freedom to believe what to choose and exercising that freedom comes without restrictions and does not require extensive knowledge. Over the years, my life experiences and reading have provided me with valuable information on a wide range of subjects. Engaging with mythologies, classic literature, history, world literature, medical advancements,
scientific discoveries, and many other topics have been enriching and worth discussing with my more learned colleagues. But I wanted a dialogue with a common man and write it as poetry. The simplicity of spoken language gives me an opportunity for ease, surprise, and the possibility of creating compounded meanings and hiding many complexities. Often, poets use the genitive case, possessive case, but I use personification and comparison cases. Ample possibilities were provided by the ideas about God developed over several centuries, and those became complexities hidden behind the apparent simplicity. He uses the word medical. He was practicing doctor because now he has given it up. So my next question is: you were a science student, and yet you started writing poetry at a very young age. Please revisit that initial phase when you were immediately noticed as an important poet with an original voice amongst the cacophony of many writing under the influence of euphoria of modernism that had erupted under the influence of Suresh Joshi. I'm talking about the time period of the onwards when modernism started in Gujarat. Would you like to remember anything or anyone that nourished your poetry writing in particular during the initial phase of your poetry writing? Studying science taught me to ask questions. Why? How? Or what? Is there another possibility? And so on. Becoming a doctor brought me close to largely poor sufferers. Three persons guided me during the early writing. Vachubhai Rawat, who edited Kumar, kept me close to the traditions of Gujarati. Suresh Joshi, who edited Kshitij, showed world literature and modernity. Rajendra Shah, who edited Kavilok and had weekly meetings with poets, really taught me what poetry is. With his traditional living, universal attitude, and liberal thinking. Later, when my teens were ending, Darwin, Simon Freud, Eliot, Sartre, Camus, and Tristan Zara with surrealists and some Upanishads they entered. But the biggest of this was Rainer Maria Rilke. You were very regular with your poetry writing when you started writing from 1962. And after a decade or so, suddenly in the 70s, for almost 12 years of silence, after, when you almost abandoned writing. Why was that? Was it a writer's block or a conscious decision? What made you resume writing and that to writing prolifically that continues till now? It was a deliberate decision. I wanted to know what poetry is. For more than 15 years, I did not write and kept reading, listening to music, viewing paintings, and seeing films.
I ultimately understood that poetry or art are entities beyond definition, but they require and provide multiple experiences of expanding one's consciousness. Since we are many cells, they also retain their diversity. A sound, word, image, question, and answer are multivalent. And the artist also has multiple choices. Continuing writing was one of them. And I'm not a prolific writer, though several forms are tried, but not pragmatically. You are a poet who is very conscious about the language of the poem and usually structure and design in a subtle way in the context of meanings, images, rhymes, and references. There is no line in your poem that is there without the poet's choice. You work like a scientist or an architect and never under euphoria. Tell us something about your creative process. What has changed over years and what has remained? Art is multi-layered. Knowing this, I often write in sequences. Sometimes there are different poems, but some appear as theme variations. But by and large, I'm a conservative writer. I have not tried revolutionary forms, nor have I pursued irrational. I have not experimented with grammar. I lack the boldness to shout or even whisper obscenities. I'm too timid to let my fancy run riot. While writing a poem, a word, or a group of words, or an idea draws my attention and I explore in them. This is not a scientific way because I stop as soon as something of value is found, like a curbside predator. I take something of worth for me and I run. At times, I, I change a spelling, a pun, or hint of a rhyme, historiological or mythological reference, brevity or ample description of a dramatic surprise are measly achievements of any, but I keep changing while writing a poem when a poem is not a gift of muses, nor a verbalization of a personal experience, and neither a divine text. Every poem is an exploration and as well as continuous response to language. That is why I keep changing and I leave behind many unfinished poems also. You have a strong base and understanding of Sanskrit language and literature on one hand, and a deep and vast study of world literature on the other. Would you acknowledge their contribution to your poetry writing? Sanskrit classics have provided
provided some material. And other languages also have honed my taste for writing art. However, mythologies have tempted me to incorporate them into my work. Gradually, I could write something where the ignorance of suggested myth would not hinder a reader, but the knowledge would add to the experience. Like Kalidas, I sometimes borrow from Valmiki and make some character of Krishna Dvaipayan say that in a different context and dialect. I similarly use Greek mythologies. Sometimes I use the language of films. A line from Eliot, Paz, or Zbigniew Herbert is the same to me as any experience of life and would serve as material of my poem. Your poems are largely devoid of personal life, but always attempt to embrace the universal. Do you not find the colorful personal to be the subjects of your poems? Can you please explain to us that is it a conscious choice not to bring personal sorrow, joy, nostalgia in your poem? Do you ever worry how the readers will react to the absence of traditional emotional or romantic shades? You see, my personal life and experiences, they are perishable. Everlasting is the word of language. That is because millions and millions have uttered and given meaning to it. A poet can show surprise still within it. I have led a very colorful life that makes an interesting narrative, but articulating it as poetry is of no. I am reluctant to convey my personal feelings as artistic particulars. The language provides enough material for art, burdening the reader with personal emotions and events and attributing aesthetic value to them has a stink of specious superiority. Some writers have used drama as disinfectant to this whole to this, while sometimes some have greatly turned personal into general, like Picasso in Guernica. This is called Sadharanikaran in Sanskrit aesthetics, but every artist is not that fortunate. As already stated, your poems have many references to not only Indian history and mythology, but to the world as well. It also, in a way, indicates your vast interest and insights. Your first collection was titled Pandu Kavyo Ane Itar, which has many references to Mahabharata starting with the title itself. I find your poems do not re-narrate the past as it is, which some poets do, or who use them as ornaments, but you put the past in the context of the present
and eventually surprise the divisions of time to aim at the universal eternal. It is possible that a reader may not be able to grasp many of the hidden references, and in such a case, does your work become less enjoyable for him, or do you work with an awareness that lack of it is not a hurdle between a reader and the poet? Looking back on a span of 6.5 decades of poetry writing, did this device help you as much as you wished, and are you still fascinated by it? I uh, Long thank you for your, or bashfully I accept your compliment. But in Sanskrit, a bhavak is defined as Saruday Adhikari bhavak. To confront any art form, a person has to earn this right. It comes in literature by reading, where the reading is not only for pleasure, but is also an exercise. One has to earn happiness by extending or expanding one's consciousness. The stagnating can always find happiness in a street corner mushairas, Sugam Sangeet, or popular films, and railway stall romances. The purpose of art is not to educate, agreed, but the reader should be ready to learn from every source. When one writes in meters, one expects that the reader is conversant with metrical structures. If one changes from Shikharini to Madakranta, the reader knows the silent weeping after reaching the mountaintop. If a poet writes in Harini, he anticipates that the reader will walk like a doe, and when one progresses in Katav or meters of Ringal, the poet envisages that the reader would follow breathlessly the environment crafted on the stage where the crowds collect. Similarly, when one writes in free verse, he expects that the reader would notice the way the words are separated or gathered. Is not a poet justified that the reader is aware of mythology that explains the interlinking of multifolded word? When one goes to musical evening or an opera or symphony, one must be acquainted with the variations of Saregama or Do Re Mi Fa Fa So. A dancer has to undergo training for many years before performing on stage. Then only the movement of one arm indicates a flowing water. A child has to exercise relentlessly before a ballet performance in youth. If an artist has to undertake such hard physical work unrelated to the exhibition of art, is it too much to expect that the viewer or the reader is prepared to face art
with the same effort. You started writing at the peak of modernism and continue to write in the postmodernism era, when poetry of protest, poetry by and for the suppressed, gender-based poetry, and now when the world is polarized like never before, there is a subtle compulsion, an invisible expectation that a poet takes a side and his voice should be loud and clear. In other words, it is expected that a poet must be a part of reality and protest through his words. What are your views on this? Do you agree with these ideas? Do you, as a poet, feel this pressure? If not, please explain what, according to you, is the function of poetry in perhaps the cruelest of the times. How will you view your Khandit Khan poems in this context? Khandit Khan poems were written post Babri demolition. That's for the reference. If the loudness of words was enough, let there be writing of protest, deprivation, gender bias, color discrimination, ecological destruction, and polarization of the political world with catchy posters and demonstrations or protests. As a human being, one can and one may support their purpose in the evolutionary process. The preservation of a species can also be an act of selfishness. But many injustices have continued to happen in human history, which is only recent. Since last 2 to 5 million years is our history. Again, nature is not designed to provide for justice. Whose side shall we as poets take? The milk giving cattle or the living grass? And what about the helpless insects in the grass that are masticated? A tall tree does not allow a short one to grow since it wants all the ultraviolet light to make nourishing carbohydrates. In the sea, the big fish swallow the small ones. Unless one converts to art, the injustice will rule and the loud voice may become hoarse. Two tribal poets originally wrote both the epics, Ramayana and Mahabharata. Valmiki was a hunter and Krishna Dvaipayan was a fisherman. They have subtly protested against the insult to the mother goddess symbolized by Sita and Draupadi. The works of these poets have survived for thousands of years. We keep on adding to still their living poetry. You have written a whole collection of poems, Kavita Vishe Kavita, that narrates your ideas of poetry and poetry writing. You often say poetry is Bhasha Karma of a poet, and the language is superior to the poet.
I would like to understand when you write, does the poet control the language or does the language take charge of the poet? In a poem, both the processes continue cyclically as well as spiral. Often these movements are evident, but there may not be a poem. And every poet has such incomplete poems. Barring these 12 years of silence long ago, you have been prolific and yet you are hardly enthusiastic about putting the poems together in a collection. I estimate at least 4 collections are awaiting daylight. Barring those 12 years of silence long ago, you have been prolific and yet you are hardly enthusiastic about putting the poems together in collections. I estimate at least 4 collections are awaiting daylight. As a Gujarati speaking person, I feel happy that Bhagwanni Vato has received this much delayed recognition. But why this disinterest on the poet's part? And what do you feel about receiving this honor? Being disorganized is one reason, and the indifference is another. One writes for a few friends, as Borges has said. One does not write for awards. If one gets an award, it is for an individual to be happy. But the writer keeps on for a few friends like you. What are your views on Gujarati poetry written today? How do you see its future here? Who is your favorite Gujarati poet and a foreign language poet who fascinates you even today? Would you like to give any message to the young or budding poets who may be here in this audience? Writing in Gujarati today is like what was a decade ago, a century ago, or several centuries when Gujarati was not there, but another language. So, writing in any language has the same pattern. Good writing grows side by side with bad. Today, in Gujarati, there are a few writers one would like to read. Madhu Rai, Ghulam Muhammad Sheikh, Sitanshu, Kamal Vora, Harish Minashru, Kanji Patel, Ramanik Sumeshwar, Mohan Parmar, Rajesh Pandya, or among the younger generation, Jayant Rathod or Ajay Soni. There are some writers I keep reading again and again. Rilke, Rabelais, Cervantes, Eliot, Valery, Octavio Paz, Zbigniew Herbert, Borges, Sartre, Camus, Faulkner, Henry Miller, Greek mythologies like like those of Robert Graves, or history of Arnold Toynbee, Freud, Darwin, and of course Valmiki, Krishnadvaipayan, and Homer. Now the last question.
We are living in an undeniable and unavoidable digital presence that has changed our lifestyle, values, and modes of communication. Do you think poetry will withstand this onslaught and survive? When the poetry was written in a script, the same questions were asked. Later came the printing, and now the electronic extravaganza. Just imagine the expanding population of several billion and their need for entertainment and information. When oppressed literature has found ways to survive. In these days of digital offensive, art will continue to exist. We may die, but our words will not. So even if there are very few in the audience, but as long as there is one person writing, poetry will survive. So let's part with this hope. Thank you very much, Dilip Javeri. Hope we have remained in time. Thank you, Shri Kamal Vora, Dr. Dilip Javeri, for this very insightful conversation about poetry in general, the European poets, and particularly how they affect Dr. Javeri and poetry in Gujarat in particular. It's a lovely insight to know what is happening in that part of the world. Thank you so much. And as you rightly said, Mr. Vora, that if there's even one person in the audience to listen to what you have said, and to read what has been written, there is hope yet for poetry. And we do have more than one people in the audience right now. Since you've given us so much food for thought, I think we should break now for lunch as well. And we'll continue our next session after lunch at 2:30 sharp. Thank you so much.